literally built 2 centuries. Today we have a rare initiative by SDT University, an idea which has been conceived by none other than Professor Dr. Dinesh Singh, to have a Vice Chancellor's conclave, when we have the Honorable Vice Chancellors of various prestigious universities of India, to talk on one forum on the relevance of Mahatma's concepts in the present national education policy. Or may I say, that is even the present national education policy catching up with the visionaries' concepts? Or are we still trying to understand what Mahatma said back then? So ladies and gentlemen, to formally welcome our guest and the Honorable Vice Chancellors of various prestigious universities, may I call upon the Honorable Vice Chancellor of the host university, the SDT University, Professor Dr. O.P. Kalra, on the dais to formally welcome our dignitaries, please. Good morning, friends. At the outset, I must deem it a great privilege on behalf of our university, our staff, and the faculty of the university as a privilege to host this conference along with Sangrachna Foundation and Shiksha Uthanyas. It's my privilege to thank Shri Vinay Sahasrabuddhe ji, Chairman, Parliamentary Standing Committee, to be here with us this morning. He is also a member of Rajya Sabha, and I am very thankful to Professor Dinesh Singh ji, former Vice Chancellor, University of Delhi, and Director of Center of Lateral Innovation, Creativity and Knowledge at our university. He is the brain behind envisioning the idea of national education policy, and he, along with his team at University of Delhi, about 10 years ago, thought about the new education policy and various aspects of this, and many of these underwent initial trials at that university. We are very happy that many of those thoughts and ideas are being implemented today. I also welcome Professor Umesh Rai ji, Vice Chancellor at University of Jammu, Professor Bechan Lal, Vice Chancellor at Cluster University Jammu, Professor C.B. Sharma, Pro Vice Chancellor at IGNOU, and also Professor of Education over there and Chairman of National Institute of Open Schooling. I thank all the participants from the SGT University and University of Delhi and various other universities of the Delhi NCR area who are here with us to participate in this very important session on national education policy. Thank you very much. Thank you so much, sir. May I now invite our honorable guest and the Vice Chancellors on the dais, please. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Shri Vinay Sahasrabuddhe on the dais, please. May I also request Professor Dinesh Singh, the moderator of the session, to kindly come on the dais. Professor Umesh Rai, Vice Chancellor, University of Jammu. Professor Bechan Lal, Vice Chancellor, Cluster University Jammu. Professor C.B. Sharma, Indira Gandhi National Open University, and Professor O.P. Kalra, Vice Chancellor, SGT University, on the dais, please. Ladies and gentlemen, it's a rare sight to have all Vice Chancellors on one stage, and that to discuss the Gandhian concepts in national education policy. May we welcome them with a big round of applause, please. SDT University is humbled to have all of you on the dais, sir. Thank you so much for being there. And now, ladies and gentlemen, to formally introduce and welcome our honorable guest, Shri Vinay Sahasrabuddhe, may I request Mr. Amog Devrai to kindly come and do the honors, please.
Good morning, everybody. Thank you for being here. Well, Dr. Vinay Prabhakar Sahasrabuddhe needs no introduction. Till recently, he was a member of Parliament, Rajya Sabha, formerly a chair of a standing committee for education and youth, amongst other things. He is currently the chairman of the Indian Council of Cultural Relations, a best-selling author. He has been part of various endeavors academically, etc. It is quite befitting that he's here in this Vice Chancellor's conclave because he has served on the University of Mumbai Senate. He has been an academician without being an academician. He's a very, very insightful man. The reason we requested Dr. Sahasrabuddhe to be here today was that recently Dr. Sahasrabuddhe, in his capacity as the chair of the Indian Council of Cultural Relations, a preeminent body of Ministry of External Affairs, along with Indira Gandhi National Center for the Arts, have brought out a book called Connecting Through Culture. It's a book you would have been seeing if you've been paying attention to the dais that we've been giving to most of our dignitaries who've been speaking. It's a book which is preeminent in a lot of things that it does, and it sets out to analyze the soft power strengths of this country. And that's why I requested Dr. Sahasrabuddhe at the invitation of Professor Dinesh Singh and the university that he should come and talk about the conundrum of internationalization of education. There is absolutely nothing stopping us from becoming the hub of education in the world, but there must be some challenges somewhere. I think that is where one of the most important conundrums that the national education policy sets out to answer. I know that Dr. Sahasrabuddhe does not have a lot of time today, so I am going to stop it here and really request Radhika to rush through it so that he can come and speak and enlighten us all. Thank you very much. I think he needs no introduction, and let us hear him because he's short of time. I'm really sorry. At the outset, let me express my gratitude for inviting me and giving me an opportunity to meet with you and sit in the company of such a galaxy of educationists and vice chancellors. So my pranams to all on the dais and greetings to all of you. Basically, when we talk about Gandhian philosophy of education, naturally what comes to our mind is his thought of Moolodyogi Shiksha or basic education. And whatever little exposure I have had, I realize that in most developing countries that particular thought is relevant even today. Maybe in a new format, maybe with some changes according to the times, but it is still very relevant, and unfortunately we have not been able to work demonstratively bringing our commitment or our kind of allegiance to Gandhian philosophy of education, and therefore there is nothing very concrete to showcase to the global community that this is Gandhiji's thought of education and this is how we have been implementing it. I mean, here and there some tidbits are there, but a comprehensive model of Gandhian philosophy education, unfortunately, we have not been very successfully able to bring to the notice of the world. Having said that, गांधी जी की शिक्षा के संदर्भ में और विशेष रूप में वैश्वीकरण की बात अब हम करते हैं और एक वैश्वीकृत दुनिया का हम हिस्सा है, तो ऐसी स्थिति में और जब मैं सॉफ्ट पावर की, दिनेश जी मुझे पता नहीं उसके लिए योग्य शब्द सौम्य संपदा है या नहीं, मगर मैं तो उसको प्रयोग में ला रहा हूं कि ये जो सौम्य संपदा है भारत की, हम उसको सृजन संपदा भी कह सकते हैं, बिकॉज इंडिया सॉफ्ट पावर इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. Our creative prowess in fact manifests in various ways through our soft power. And therefore in the context of India's soft power, if the basic thought of education in India and the need of the changing global climate in the sector of education, I see there are
huge number of opportunities available for India. First of all, I'll try to speak about how we can enhance the footprint of Indian educational thought, for that matter, of which Gandhian philosophy is an essential ingredient all over the world. In the process, how we can perhaps export our teachers and our school system. And in the second part, within a very short span of time, I'll also try to reflect upon how we can make India a global hub of higher education, which is kind of an expressed and very articulated objective of the current government and Prime Minister, and not just Prime Minister, but the Finance Minister Nirmala Sitharaman also, in so many words, elaborately explained this in her budget speech in 2019. So firstly, how we can enhance, how we can deepen our footprint. Basically, what I understand is the core of Indian philosophy of education is the teacher-taught relationship. And today, world over, if there is something about which global educationists are really worried, it is the teacher-taught relationship. Students have lost motivation in attending classes. There is no bonding kind of between the teacher and the taught, not just at the university level, but more at the school level, which is a matter of great concern world over. And newer trends which are reflecting on, newer kind of societal changes, if I may put it that way, reflecting on the sector of education. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में आज से 20-22 साल पहले एक फेलोशिप लेकर गया था। तो ये फेलोशिप एक सुपरवाइज रिसर्च के लिए थी, जो मेरा सब्जेक्ट था विशेष रूप में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, मगर अन्य अन्य विभागों में भी हम जाते थे। तो मैं एक एजुकेशन विभाग के सेमिनार में गया था, तो वहाँ पर ढेर सारे पेपर्स जो पढ़े गए, उसमें एक पेपर था हाउ टू alter the design of the school benches to accommodate pregnant kids coming to the schools, and this was in 1999. पता नहीं आज वहाँ की स्थिति क्या है। तो बदले हुए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का शिक्षा व्यवस्था पर जो परिणाम हो रहा है, यद्यपि मेरा ये कहना नहीं है कि पश्चिमी जगत में, अमेरिका में या यूके में या अन्य यूरोप में शिक्षा जगत में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही गलत है या अवैज्ञानिक है, ये मेरी सोच नहीं है। कुछ अच्छी बातें भी है वहाँ पर, मगर जो बदलते हुए हालातों के कारण जो चुनौतियाँ सामने आ रही है, उनके संदर्भ में भारतीय शिक्षा दृष्टि का जो मूलाधार है एक दृष्टि से, या केंद्र बिंदु है छात्र शिक्षक संबंध, मैं मानता हूँ कि वो बड़ा महत्वपूर्ण सा बन जाता है। हमारे एक मित्र जो वहाँ पर शिक्षक के रूप में गए, उन्होंने अपना एक किस्सा बताया। वो पहले विवेकानंद केंद्र के एक स्कूल में पढ़ाते थे अरुणाचल में, फिर पत्नी को वहाँ पर जॉब लग गया तो वहाँ गए। तो वहाँ जो भी आवश्यक क्वालिफिकेशन थी वो अर्जित करके वो पढ़ाने लगे। तो मैंने पूछा क्या अनुभव है, तो उन्होंने कहा कि एक रोचक अनुभव मैं बताता हूँ जो भारतीय शिक्षकों की प्रासंगिकता को एक दृष्टि से रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में एक छात्र लगभग 10वीं 11वीं कक्षा का 15 साल का, एक बार मेरे ध्यान में आया कि एकदम पहली दूसरी कतार में बैठता था, मगर सोता था सुबह 11 बजे भी क्लास में। बाकी सब लोग चर्चा में सहभागी होते थे, ये झपकियाँ लेता था, सोता था। तो मैंने 1-2 बार उसको उठाने की कोशिश की, वो उठा भी, जग गया, सुनने लगा, फिर सोता था। तो तीसरे चौथे दिन जब मैंने उसको जगाया तो वो उठकर खड़ा हुआ और बोला कि सर, टीचिंग इज योर जॉब, वेदर टू लिसन टू योर लेक्चर और नॉट इज अ मैटर ऑफ माई डिसीजन, इट इज माई डिस्क्रिप्शन। तात्पर्य था कि यू डू योर जॉब, अलाउ मी टू डोज, स्लीप, यू डोंट हैव एनी बिजनेस टू वेक मी अप, काइंड ऑफ। अभी जिस तरीके की व्यक्तिवादिता पश्चिम में है और अमेरिका में है, तो हमारा शिक्षक मित्र बड़ा चकित सा हो गया
But he was speechless, क्योंकि अभी कैसे argue करे? He was perplexed. And he left it there, that conversation. But being an Indian teacher, he thought it fit to go to the root cause. फिर उसके साथ उसने थोड़ा संवाद करने की कोशिश की. The student was very reluctant, but somehow he yielded, and they had a discussion over a cup of coffee. तो student ने कहा कि sir, I know that you are interested in knowing why am I sleeping in the class at 11 o'clock in the morning. The reason being that in my family there are some turbulences. Now my mother has brought a new father in my family. Now this new father doesn't want me to be a part of the family. So he is insisting that I should find some hostel accommodation somewhere or hire some studio apartment, share it with some friends, but move out of the house. And I had promised him eventually that within 6 months I'll do that. Now to do that, I require money. I don't have that. So after 10 o'clock in the night up to 3 o'clock in the morning, I work in a McDonald's shop. And therefore I come to my home at around 4 o'clock, go to bed, and therefore it becomes humanly impossible for me to remain awake at 11 o'clock, which is why I am sleeping. But in the end, the child said, sir, since you have come from India, you are interested in going to the root cause of the problem. No American teacher will venture this way. ये भारतीय शिक्षक की प्रासंगिकता है. और इसलिए ये जो छात्र अध्यापक संबंध है, मैं मानता हूं कि इसको केंद्र में रखते हुए आज मैं देखता हूं यूके में, लंदन में, शायद शहर के बीचों बीच स्वामीनारायण का एक अक्षरधाम का बहुत बड़ा विद्यालय है. और कई ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि अपने छात्र वहां जाए, क्योंकि वहाँ वायुमंडल अधिक संस्कारक्षम है, वातावरण बड़ा अच्छा है, बड़ी गंभीरता से पढ़ाया जाता है. तो मैं मानता हूं कि भारतीय शिक्षकों के लिए ये ग्लोबलाइज्ड विश्व में काफी सारे अवसर है. भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए अवसर है, भारतीय अध्ययन अध्यापन पद्धति के लिए भी कुछ छोटे बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे, मगर फिर भी अवसर है. आज हम जब नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले कई देशों ने हमें आईसीसीआर के माध्यम से पूछा कि क्या इस पर हमें कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है. वी वुड लाइक टू emulate some part of the national education policy which the government has unveiled. So the point is that there is huge scope, and we need to first of all identify those niche areas where perhaps we can intervene and influence the educational community world over. Through our teachers, through our educational systems, through our new national education policy, so on and so forth. Of course, it is not my claim that everything is ideal here, but whatever new experiments that we are undertaking seem to be attracting the attention of the global community, and to that extent, I think whatever is worth emulating, we should be facilitating the global educationists to understand that, and later on, if they so desire, emulate. This is point number one. Point number two is, how do we attract the foreign students in good number? Maybe many of you, all very experienced persons on the dais also, must be aware that India is the 26th amongst the as destination countries, as what they call. India is preferred at the 26th number to go to higher education. But India is the third source country. So many students we export abroad, and we know the brain drain and related issues we have been debating and discussing for several decades for that matter. So why do people go abroad? I think better we leave it for some other time. But how we can enhance the number of students coming to India for higher education, it's something we require to pay serious attention to. Because when students come to India, they go with a little bit of India in their, not just in their mind and in their thinking, but in their life also, I believe. The time that they have spent in India and in Indian institutions definitely makes a big difference. There are several countries, including our neighboring countries, where
many prime ministers, presidents, speakers of their parliaments, judges in their Supreme Courts have had their education in India. I am told in a country in Africa, perhaps Tanzania, if I am correct, at least 75% of the cabinet is of the alumni of Indian institutions. So this is the power that we wield. But unfortunately, we have not been able to build upon that, and therefore, first and foremost is the need to build upon the alumni base that various institutions in India have. And this alumni base, I am not talking just about formal universities or colleges. There are informal institutions as well. Somebody comes to learn tabla here, spends maybe 6 months here and goes back. He is also a alumni of India in a way, but we don't have any record because there is no trainee visa as such in the visa category. He comes as a tourist and then nobody knows where he has gone and what kind of training he has taken. So we have in fact requested the relevant authorities to issue a trainee visa kind of category as well. And not just tabla, even Bharatanatyam for that matter. There are people who want to come and study our scriptures here. So all these things which are a part of our traditional Indian knowledge system require to be taken into account, and we need to build upon that. This is first thing which is required. Secondly, students will come here if they get good facilities. ICCR supports close to 4,000 students every year, and they are spread over various institutions, public institutions, private institutions as well. But many a times they face several problems. For example, in certain states they don't get non-vegetarian food regularly. There are certain states where the universities are hell-bent upon giving education in their regional language, which doesn't naturally suit them. And therefore, ICCR in fact conducted a conference called Destination India in January 2019 with the help of the Symbiosis University in Pune. And having deliberated on this subject for 2 days, we have come out with a report. I'm sure it is available on our website, where one of our recommendations is whether the UGC can create a special kind of category of institutions that are fit for hosting foreign students, both universities and colleges and other institutions also, where the hostel facilities are adequate, where there is a counselor, because there are many issues, psychological and other issues as well, and including their food and whatever other things that they require are properly taken care of. Without that, people won't come here. Let us understand that. And therefore, this is another aspect which is something that merits our attention. The third thing is the kind of restructuring of our syllabi, which requires to happen every now and then, at least once in every 3 years. That process is also not very established here, and therefore many a times students coming from abroad feel, after having landed over here, that perhaps they were expecting a little higher level of knowledge here, and that is not adequate. Forget about technology. IITs and even IIM business schools are taking care of this because they have a more autonomous and independent way of functioning thanks to the provisions in the relevant laws. But for others, this is not happening, and that also in a way keeps the foreign students away. So all in all, what I want to suggest is that this subject, attracting foreign students in good number, is also relevant in the context of our soft power. The more students from abroad come over here and get the experience of India, get the test of India, they naturally and very automatically become our informal ambassadors, and not just of India, but Indian culture as well. And therefore, we are losing an opportunity. There are all kinds of very weird regulations which prevent us from working on this. They need to be done away with. I'm sure a comprehensive view of this particular thing, if we are able to, first of all, deliberate upon and then
perhaps influence the decision makers in the government to create a policy for attracting many more foreign students here with the objective of making India a global hub of higher education. I'm sure, I'm quite hopeful that something will happen sooner than later. Thank you very much. Thank you so much, sir. Shri Sahasrabudhe beautifully pointed out at the very basic of our education system, the teacher-taught relationship. And today when we talk of globalization, it was so humbling to hear that India probably has one of the best, one of the closest teacher-taught relationships. And of course, we need to work on various areas of improvement, and we all pray and hope for the day when India becomes the hub for global education. Thank you so much, sir, for these nice words. And now, ladies and gentlemen, it's time that we felicitate our guests. May I request Professor Dinesh Singh to kindly felicitate our honorable guest, Shri Sahasrabudhe, please. So thank you so much for gracing the occasion. And may I now request the Honorable Vice Chancellor, SDT University, to present sir with a memento of the SDT University, please. Can we have the memento of SDT University? Thank you so much, sir. Thank you for gracing the occasion. Yes, yes, please. Thank you for coming. And now, ladies and gentlemen, we have all our learned vice chancellors on the dais. So I think the stage be left to them. May I request Professor Dinesh Singh to kindly take over and moderate the session, the Vice Chancellor's Conclave. Please join me in welcoming Professor Dinesh Singh on the dais, please. Good morning. I'm delighted to be here in your midst once again, and we enjoyed all those sessions yesterday. They gave us a lot of food for thought, and I think we've gotten off to a good start with Dr. Sahasrabudhe's address, where he sets the tone on what makes India a potential hub for education, how we could enhance our soft power. And I was wondering when he was speaking that is Gandhi also to be considered as a tool, not in a derogatory sense, but in an exalted sense, as a tool for soft power, particularly in the realm of education. And I have with me a galaxy of scholars, academics. Each one of them has exercised their minds for the cause of education. They are incidentally experts in their own realms of academic expertise. They are outstanding scholars. But in addition, they have spent time, each one of them, in enhancing several aspects of India's educational systems. And I thought it would be best if we have a format where we discuss with each other by asking questions and they speak. And I want the audience to be engaged, all those young minds here, because in the end we will reserve a fair amount of time for members of the audience also to interact, ask questions, make comments. So without much ado, I launch this session. I will quickly just mention that we keep Gandhiji in the background and look at the needs and challenges of India in today's context for education.
So there should always be in our own mindset, given the theme of the whole enterprise, there should always be in our mindset a Gandhian perspective. But remember, the one thing that Gandhiji said was that just because I said something yesterday does not prevent me from changing it today if I have become wiser. So we must keep that in mind, this dynamic flexibility that he had. And I would like to commence this session by asking my colleague, my friend, and my younger brother, Professor Umesh Rai, and there's a special reason why I commence with him, because we worked hand in hand to change the University of Delhi's four-year program, to convert the University of Delhi to a four-year program. And there were many Gandhian virtues, attributes, and desirable programs that we tried to embed in the whole activity, which is now essentially represented by the national education policy. So Professor Rai, in your own mind, how do you see some aspects of Gandhiji in the four-year program that you helped launch at the University of Delhi? Thank you, sir. Very good morning to all of you. At the outset, I must thank SGT University for inviting me to be the part of this session. Whatever I could learn about the education, I learned under the leadership of Professor Dinesh Singh ji. As he said, I was the part of that team as Director South Campus when Delhi University implemented the four-year undergraduate program with multiple exit options in 2012. And what were the salient features of that program? First, I am mentioning multiple exit option. After 1 year certificate, after 2 years diploma, 3 years degree, and 4 years honors. The same, that multiple exit option that is been adopted in the National Education Policy 2020. Second, I will come to Gandhiji aspect. Let me first focus on that. Second part is that the students were given the options, so flexibility, academic flexibility. And when that program in 2012 was offered, in that the students were having the choice, even the, in the form of minors, in the form of foundation courses, in the form of skill courses. So skill courses, foundation courses in National Education Policy is now referred as academic enhancement, I think, ability, something like that. And skill courses, we refer that as an application course. Value-added courses, that was also at that time in 2012, that was adopted. So skills, innovation, academic flexibility, the ability enhancement, value-added, even the extracurricular activities like sports, cultural activities, NCC, NSS, were made the part of that curriculum in 2012, and all these things are featured as important points in the National Education Policy 2020. If I say, I would not, it would not be, let me say that it would be more appropriate if I say that the National Education Policy 2020 is more or less the replica of that which was adopted by the University of Delhi under the leadership of Professor Dinesh Singh ji in 2012. Now I'm coming to the Gandhiji's views on education.
if you read the literature, you will find that during the colonial period, it was projected like that the Gandhiji was against the science. But no, it was not true. Even Gandhiji said that perception has been created about me. This is not true. And if you see the Nai Talim, in that the Gandhiji gave the emphasis to connect the education with the need of the society. Not blindly follow the Western model. And in the national education policy, the same we are reiterating that our education must address the need of the country, the need of the society. And I'm giving you the example of my own discipline. Basically, my discipline is zoology, जंतु विज्ञान. और थोड़ा हम आपको बताते हैं, not only in Delhi University, in all the universities wherever this course is being offered. हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में हम स्पेशल पेपर चलाते हैं. वी आर रनिंग द स्पेशल पेपर्स इन फिशरी, वी आर रनिंग द स्पेशल पेपर इन एंटोमोलॉजी. Fishery through blackboard teaching. Can you imagine that the students would learn about the fishery through blackboard teaching? Or the classes should be held at where the fish farming is going on. And the farmers know much more than what we teach in the classroom. Absolutely par excellence, the farmers know about that fishery. But we are not inviting the farmers, industrialists, the civil society people, army people as the visiting fellow in the university system. Gandhiji emphasized that education must be connected with the society, and society people should be invited. They should be the part of the education system. So that is being addressed in the National Education Policy 2020. I will not take much time, sir. One more example I would give, that Gandhiji emphasized about the mind, body, and spirit. So education, these three components. And unfortunately, the education is addressing the mind. In the National Education Policy, through value-based education and through hands-on experiences, we are addressing that part also. So, Gandhiji was experimentalist. And in this National Education Policy, the emphasis is given on the hands-on experience. So, through that, we can understand that what we mean about the education. Education will empower us to understand about the life. So this is all about I would like to say. Rest I would like to answer the questions if you have any later on. Thank you very much. So if I understood Professor Rai and what he meant, repeatedly mentioned that Gandhiji's spirit said that in education, when you connect to the needs of the nation, you have to make it action-oriented. The example of fisheries that he said. I would request Professor Bechenlal, with your own perspective, where do you see the sciences particularly, but you're welcome to take up other issues, where do you see sciences in a Gandhian context? Do you think that we could work them through a Gandhian lens, and they are certainly a strong part of the national education policy? Do you think sciences should also be exposed to the people who study other disciplines, humanities, social sciences? I'd love to hear your perspective. Thank you, sir. At the very outset, I like to extend my cordial gratitude to the SGT University Organizing Committee, and in particular, sir, to you, because you invited me to participate and share my views on the topics. I also take up this opportunity to congratulate you, sir, for your novel service to the nation, because as Professor Rai was referring, and even the nation knows
that long back, about a decade back, you envisaged an idea which is now, not only that, you rather tried to implement, but for some other reasons, everybody knows it, what was the reason, but it was foiled, attempt was foiled. But that way you really served the nation to give the idea and new thoughts about the education policy. So, sir, we are obliged that you really gave a nice thought to the country upon which this NEP 22 is built upon. So, as far as you said that my Gandhian concept on the education, in fact, as Dr. Vinay Sahasrabudhe was talking of, that as such we don't get any specific concept given by him. But if you look into the Gram Swaraj, if you go into the various articles published in the Young India, there he has expressed his views, and he always favored a society-centric, environment-centric, soul-centric education, which will not only help in strengthening the mind and soul of individual, rather it will be terminating into the well-being of individual, well-being of the society, well-being of the nation, and well-being of the universe as such. So education should be helping persons or individuals to evolve to the higher conscious level. So he has been talking of like that. And that is the reason that he always, and there are many things. The experiential learning is par excellence. It cannot be compared with any backboard teaching. And for experience, one has to go to the field, one has to go to the society, he has to interact with the people, he has to feel the problem, then only he can derive some solution, he can come in conclusion. So, sir, he has been always in favor of the experiential learning, and perhaps this NEP 20 has tried to move ahead a few steps in that directions. But, sir, I was looking at the program, and I'm quite sure that this concept must have been well dealt yesterday, and we have also a special session on that. I would like to focus particularly, there is one component I see, that is the implementation in the NEP 2020. I represent a university which is a very lean thing in the means. Primarily it is two components is there by clustering 5 best, very old, prestigious colleges of the Jammu. But I know that even those colleges are very deficient in means, in terms of fund, in terms of facility, in terms of faculty. And whatever faculties are there, also they are not very competent, in my opinion. They have a certain set of mindset. And if one has to realize the goal of the NEP 2020, their capacity building has to be, it is very essential to build their capacity. They change their mindset. In fact, the entire thing goes around the mindset. It's not only the teacher, it's the society, students, every mindset. We have been so much overwhelmed by some conventional thoughts, conventional way of doing the things. So there is so much of inertia that people don't want to come out of that. Unless there has to be a very rigorous effort on this, then only the goals what have been set for in 2020 will be realized. So these are the two, likewise there is another component in my university is there, that is schools. It's very unfortunate that likewise there are many more colleges and colleges universities are there, sir. Entire university is running on the ad hoc basis. Teachers are on ad hoc, non-teachers are on ad hoc. If they are on ad hoc basis, they are going changing every year
So their commitment, their belongingness to the subject as well as the institution as well as to the students, we can imagine. And unfortunately, we are talking of 2020. Nobody is talking of how it will be implemented. There is a big problem in that. We have various courses. We have a domain-specific major and minors. We have value-added courses. We have ability enhancement courses. We have skill courses. We have many more. We all fully agree. I think after rolling out the 2020 NEP, in July, almost 2 years have passed. There has been enough discussion, and bearing few criticism, adverse criticism, as such people have accepted it. As such people have accepted it, and they have appreciated it also. But now the question comes on the implementation part, and that's very crucial, otherwise it will fail. And for that, a proper, and another component you have written, sir, opportunity. So this is also a opportunity we have to go inside and we will look for. And again I congratulate you, sir, that you have given the idea of the meta-university, meta-colleges. So there has to be a pulling up the knowledge experts, knowledge expertise. Then only, because in a day or in a year or in a decade even, these all problems, such a big country is there are a lot of deficiency, there is a regional divide is there is a mindset divide is there are various kind of divide is there, and out of that, if one is really interested to implement it, then, so government has certain limitations. So one has to look into that, this faculty has to look for opportunity. There is a digital platform, of course it is available, but not all the domain-specific detailed courses are available. There are small courses are there. So it's an opportunity for the faculty, competent faculty, to build up those courses, put on the digital platform, so that through e-learning, students sitting at the far places, they can utilize that. So that is one of the opportunities there. But again, one has to thoroughly look into, thoroughly work for that. And again, an initiative is interested. Some kind of incentives from the government side is interested. So that can solve the problem that way, but it has to be. And as I told you, the competency of the teachers, that's a very important thing, sir. What I feel that, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूँ, कोविड पीरियड के समय एक एक्सपेरिमेंट हुआ ऑनलाइन टीचिंग का और ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स का, एग्जामिनेशंस का. वो एक स्पेशल सिचुएशन थी. It was implemented with good or bad both the tests. But now the student as well as the teacher both want to continue in the same way. In fact, the online teaching or the online evaluation cannot replace the offline. Offline has its own distinct characters, features that cannot be replaced by it. But that tendency has percolated inside. That's a big problem university is facing. So that way, this change of mindset, and for that, Professor Umesh Rai is facing, sir, he was in fact locked yesterday. Students are demanding, and some of the senior professors are favoring them. Teachers provoke them. That's a big problem, how to deal with that. So that's the major problem in the implementation. As far as the Gandhian concept is there, Gandhiji has been always very liberal on that. He has been saying that the one has to evolve, and for that he has to look for the problem, he has to go to the society, and this NEP 20 provides that opportunity to go into the field, to go and meet the people, look for their problem, their own problems, and that way they can progress, and they can this NEP 20 can be, objectives of the NEP 2020 can be realized. Thank you very much. If there is any question, I will be... Certainly, there will be some questions to follow, but as I understood you, I think your biggest concern is how do we implement the policy, and in that context you mentioned that
it is the faculty, the teachers, who need to be reoriented, to be energized, and they need to move out of their cocoons of comfort. They must get out of that. There is a large teacher audience here. They are all young, most of them. At least all of them are young at heart. And I hope that we begin to recognize that the onus is on us as teachers to recognize the essential salient features of the national education policy and implement it in the correct way. Let us not be mechanical, and let us not look for instances where we say this can't be done. Let's see how we can do whatever that can be done. And therefore I ask my colleague, Professor Kalra, with his vast experience, Professor Kalra, where do you see SGT University headed in terms of the national education policy? Do you see there are flowers blooming on the horizon that indicate that we are headed in the right direction? What are your own views on the matter? On. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to participate in this panel discussion. Now, as far as national education policy at the SGT University is concerned, I'll talk a little about that and also about the medical education as such, because we are primarily a health sciences university and we have 9 faculties where medical, dental and other allied health sciences courses are being run. So it's also important for us to know what is the provision as far as the medical and other allied health sciences are concerned, as far as the national education policy is concerned. Now overall, as far as the contribution or the lead which has been taken by the SGT University into implementation of various aspects of national education policy is concerned, our university has been working quite hard for the last year or so, particularly for implementation of various aspects of national education policy, such as creation of infrastructure. That is one part of it. Creation of smart rooms, ultra smart rooms and other infrastructure so that we are able to impart the education to each and every person in a more objectivized way. Secondly, we have created a bouquet of large number of value-added courses. These are almost 217 courses which are value-added ability enhancement courses which are available to the students in all the 18 faculties. We have almost 7,000 students studying at the university, and these are being offered to all the students, and accordingly the curriculum is being arranged that way. Secondly, the teachers are also being trained so that they are able to have various skills as far as various pedagogic techniques are concerned. We organized recently several sessions in collaboration with NEPA, that is National Institute of Educational Planning and Administration, and whereby our nearly 70 teachers were trained into various aspects of, technical aspects of preparing MOOCs and other online lectures. And our faculty has been working very hard for preparing of web content, and more than 7,000 e-classes have been prepared by the faculty, and many of these have already been uploaded on the LMS of the university. So that is giving just a glimpse of what our university is doing. Dr. Dhawan has already covered some of these aspects in yesterday's deliberations, I am told. But second thing is that I would also like to mention a few words about the medical sciences, because ours being a health sciences university. So although as far as the national education policy is concerned, there is very little said about the medical education as such in the national education policy, but there is one very clear mention while giving the overall regulatory framework of the education system in the country is concerned. There it is mentioned that the students who are going to be trained in allopathic system of medicine, they will also have a basic understanding or basic knowledge
of the other system, Indian systems of medicine, such as Ayurveda, as yoga, Siddha, Unani, etc. Now, this is very important because somewhere down the line, our doctors, young doctors, are forgetting our own systems. And it's actually an apprehension in the minds of some of the people that once we practice other forms of medicine, it amounts to cross-pathy. Actually, it is not practicing cross-pathy. There are many diseases where there is definitely, if we combine different modalities of treatment, then we can offer a better form of overall healing process. And for example, conditions such as gastrointestinal, neurological, psychological diseases, where many other forms of therapy are helpful. And this is very much in sync with Gandhian principles that we should not be treating only the body. We should be looking at the mind, body, as well as the soul, and treat the patient in an overall holistic manner. Not only treat the physical ailment part of it and leave the other aspects like mind and body, mind and soul of the person away from it. So therefore, this particular thing has a great relevance with the Gandhian thoughts. And Gandhi actually had at one stage said that when we are treating the patient, it is not that patient should come and thank us. These are the words of Gandhi that in fact it is the doctors, they have to actually thank the patients for giving an opportunity to them to serve the God through his fellow beings. So therefore, when we are serving the humans, we are in a way serving the cause of this mankind and serving the people of the God. And there was also a lot of emphasis by Gandhi on ethical values, moral values, and ethics and moral values, these are very important. Compassion is another part, that when we are treating the patient, we should not be treating them just as anybody, or sometimes in the wards we see that the doctor is saying, what happened to bed number 15? What happened to bed number 52? That is not the correct way of practicing medicine. We should treat them as human beings. Many of them are breadwinning people. Many of them are, everybody is having their families and so many people, social gatherings around him. So therefore, we should treat them as somebody who is not only a single human person, but he is a person who is linked to the entire society. And therefore, treating them with ethics is very important, and that is also enshrined in the compilations of various speeches, works, writings of Mahatma Gandhi, which were brought out in the form of Nai Talim nearly 100 years ago. So therefore, medical education particularly has drawn a lot of inspiration from those things. And Gandhiji also had laid emphasis on acquisition of skills, and which is locally relevant. That is why he preached Charkha, because that is relevant to creating local skills for the people. And our medical doctors, actually, it was being felt for a long time that we are not paying so much of emphasis on the skills during our undergraduate training program. That is why every graduate who is passing out from the medical college, they were feeling that they should go for post-graduation. But now, last 2 years or so, the entire curriculum has been revised, and it is now competency-based medical education. So we have to lay and make sure that students, they acquire those competencies and skills during their MBBS curriculum, and when they come out as graduates, even if they don't do post-graduation, they should be competent to treat the patients independently and be self-sufficient person, because if a person doesn't get admission into post-graduation, he should not feel frustrated and he should be able to treat the patients himself. So there is a lot of relevance as far as education is concerned, and particularly medical education, though as I told, it doesn't have so much component in the national education policy, but certainly a lot of inspiration has been drawn from the Gandhian thoughts
into the medical education system. Thank you very much. Thank you very much, Professor Kalra. So I am now eagerly awaiting the insights of Professor C.B. Sharma, who has a vast experience in the realm of various aspects of education. He is himself, of course, from the realm of education as an expert, but even his administrative experience, and particularly in the National Open School. So, Professor Sharma, in the context of the national education policy and Gandhiji, would you like your opening remarks to be along those lines? We'd love to hear your insights on where you see technology, open learning, and education in general. परम श्रद्धेय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मंच ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहा हूं. Thank you very much for inviting me, SGT University, and giving me this opportunity. I have lived National Education Policy 2020, 2015-20. I was a part of the drafting right since the beginning of this policy, and I have been involved, and you can see impacts of my being there right through the policy, especially in the school education sector. When this topic was declared and Amit contacted me, I said, Gandhi and NEP 2020, I don't think, I must have addressed at least 200 seminars, keynotes on NEP. It's on my tapes, but nobody has discussed about Gandhi and this policy. I have spoken on a number of occasions on the impact of Gandhi on this policy. In fact, if you look at and read the school education part, it's nothing but Gandhi. It's nothing but Gandhi. And I must say, I'm a Gandhian. So without saying we are copying Gandhi, we had put in ideas which are purely Gandhian. Let me recount a couple of them. Look at the policies, plans, commission reports, pre-independence, 1911 Charter Act, right up to 1944, the Sargent Commission, and read the policies 47, 2014, you will find a mirror image. What the British government was saying after 1911 Charter Act, what we should do in India, has been replicated after 1947, but never implemented. 2020 has nothing new. Even when I say I'm a part of it, we have not said anything which was not said before, and they were all Gandhian. What? First, Gandhi always emphasized on literacy. Read Gandhi's address to Chatham House in 1931 when he visited London, and he created a furore when he said, we had 95% literacy, and when you implemented your policy, we have come down to 7%. What did you do to my country? Read Dharampal's The Beautiful Tree. The British government took up a massive survey of education, and commissionary after commissionary, the report came, yes, there was massive literacy in India because it was society supported. समाज पोषित था शिक्षा हमारे देश में, इसलिए शिक्षा इतना व्यापक था और घर घर में था. और आप सब एक बार जरूर ब्यूटीफुल ट्री पढ़े धर्मपाल का. लगातार अंग्रेज सरकार ये कह रही थी शेड्यूल कास्ट का पढ़ाई नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब की नहीं हुई, माइनॉरिटीज का नहीं हुआ. धर्मपाल की किताब में ये सारा डेटा है कि जितना शिरकत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का था, माइनॉरिटीज का था, उतना ही दूसरी कम्युनिटीज का था. ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी जो कि हमारे शिक्षा को पीछे फेंक दी. ये पॉलिसी उसी को बदलने का काम करती है. पहली बार 18 मई 2014 को गार्जियन का एडिटोरियल पढ़िए. समय नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ के सुनाता. गार्जियन अपने एडिटोरियल में कहता है, पहली बार भारत में एक भारत की सरकार आने जा रही है और ब्रिटिश राज का अंत हो रहा है. अब भारत में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है भारत का, जो अब सही तौर पर अंग्रेजी शासन को खत्म करेगा भारत में. ये पढ़ने लायक एडिटोरियल है 18 मई 2014 का गार्जियन का. क्या कहते हैं गांधी? गांधी कहते हैं सबसे पहले बुनियादी शिक्षा.
1937 का बुनियादी शिक्षा पढ़िए क्या है गांधी का। गांधी ने, अभी टीचर एजुकेशन की बात आदरणीय सहस्त्रबुद्धे जी करके गए, गांधी जी सबसे ज्यादा जोर शिक्षक पर दिए थे। उन्होंने कहा था गांव की लड़की जो पढ़ी लिखी है उसी को टीचर बनाओ, वो वहीं रह के पढ़ाएगी। हम लोगों ने यही बात कहा है चैप्टर 5 में। ये हमारे कमीशन का रिपोर्ट था, सिद्दीकी कमेटी, जिसका मेरा सौभाग्य था कि मैं सदस्य था, एनसीटी रिव्यू कमेटी, और हम लोगों ने कहा था कि टीचर एजुकेशन 4 इयर्स होना चाहिए और नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लेके होना चाहिए। ये गांधी का आइडिया है 37 का। गांधी ने कहा था लड़कियां ही सबसे अच्छी टीचर है, उन्हीं को एप्टीट्यूड है। 80% वर्कफोर्स स्कूल का लड़कियां हैं, औरतें हैं। सारे पॉलिसीज मेल डोमिनेटेड बनते हैं। हम लोगों ने इस पॉलिसी में इसको बदला है। क्या कहा हम लोगों ने? एक नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लो आफ्टर 12th। मेरा इंटरवेंशन लंबा ना हो जाए। क्यों हम लोगों ने कहा यह बात? देश में 62 स्कूल बोर्ड हैं। सभी स्कूल बोर्ड का रिजल्ट उठा के देखिए, लड़कियां आउट परफॉर्म करती हैं लड़कों को। ये जाती कहां है ग्रेजुएशन में? ये क्यों पिछड़ जाती हैं? क्योंकि हायर एजुकेशन मेरा इनके लिए नहीं गियर्ड है। हम लोगों ने ये कहा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लो, बिना ये कहे कि जिनको गांधी कह रहे थे और सही तौर पर हम वेस्ट को इमिटेट करते हैं और कहते हैं लड़कियों को आर्मी में रख दो, इजराइल एयरफोर्स में रखा है तो हम भी रखेंगे। जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े देश हैं। हम लोगों ने कहा इसमें लड़कियां निश्चित तौर पर लड़कों को पीछे धकेल देंगी और वही आगे करेंगी अगर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर टीचिंग लोगे तो। फिर क्या हुआ? हम लोगों ने देश भर भ्रमण किया था और मिले थे बच्चों से, टीचर से, गार्जियन से। पुणे की 2 लड़की बोली। हम लोगों ने वहां कहा कि हम लोग रिकमेंड करने जा रहे हैं 4 ईयर बीएड। लड़कियों ने कहा कि ऐसा मत करिएगा। 2 मुसलमान लड़कियां, मैं जानबूझ के ये बात हर बार कोट करता हूं, लंच टाइम में 2 मुसलमान लड़कियां हम लोगों के पास आई। कहीं सर अगर आप लोग ये रिकमेंड करेंगे तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, टीचर नहीं बन पाएंगे। क्यों? कहा देखिए 1 साल का बीएड था तो हम को पेरेंट्स दे देते थे कि 50,000 तक फीस है तो दहेज कम हो जाएगा, लड़की बीएड है तो दहेज कम हो जाएगा। जब 2 साल हुआ तो अब देखिए डेटा गम गया। और अगर 4 साल करेंगे तो कोई भी हम लोगों को बीएड नहीं कराएगा, हमारे पेरेंट्स हमारी शादी कर देंगे और हम बीएड नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने रिकमेंडेशन में दिया। That report somehow has not been made public. It's Siddiki committee. Someday I will leak it. But we said take a national aptitude test, select as many teachers as you want 4 years down the line, and give a scholarship to everyone. What were we saying? What Gandhi said in 1937, that definitely girls would outperform, give them a scholarship so that they can be trained on public money and they would be teaching. Now, we realized, and it was said, most of the women resign from jobs. We have massive data. When they are transferred, we have mentioned in the policy, no transfers. बड़ी सोची समझी ये पॉलिसी है। अब चूंकि मैं जिया हूं, मैं एक वर्ड, एक लाइन आपको कोट कर सकता हूं। तो जब गांव में रहेगी तो अपने पेरेंट्स के घर में रहेगी या इन लॉज के घर में रहेगी? हम लोगों ने कहा एकोमोडेशन दो। बड़ी बहस हुई थी, मैं वेस्ट में रहा हूं, वेस्ट में एकोमोडेशन नहीं दिया जाता है। मैं भी चाहता हूं कि एकोमोडेशन ना दीजिए क्योंकि वो मैसिव खर्च होता है। प्लम्बर लगाइए, फिर मेसन लगाइए, फिर इलेक्ट्रीशियन लगाइए, 2 मकान भी हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ेगा। सर हिला रहे हैं तो हम लोगों ने कहा कि आप एनहांस्ड एचआरए दीजिए टीचर को, किसी प्रोफेशन में देने की जरूरत नहीं है, टीचर को दीजिए क्योंकि उसको जरूरत है, वो छोड़ देती है जॉब, इसलिए करिए। बिल्कुल गांधी जी जो चाहते थे वही इसमें रिप्लिकेटेड है। और अगर 2 चीजें तो सरकार मान ली है, कर भी रही है, एक नेशनल एप्टीट्यूड होने जा रहा है टेस्ट, और ये भी कह रही है कि हम लड़कियों को प्रश्रय देंगे, लेकिन स्कॉलरशिप देंगे कि नहीं देंगे अभी कहा नहीं गया है। मैं हर बार ये कहता हूं, देखिए सरकार का एक अपना धर्म होता है और वो अपने तरह से काम करती है। वो प्रेशर ग्रुप तो आप ही को बनना है कि अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप भी दीजिए कि जितने को आप चाहते हैं 4 साल बाद टीचिंग में आना। लगभग 3.5-4 लाख टीचर्स की हम लोगों को हर साल जरूरत पड़ती है, इतने लोग रिटायर होते हैं। ये पॉलिसी बिल्कुल टीचर सेंट्रिक है।
हमारा भी अंदाज है, पॉलिसी भी ये कह रही है कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन को ठीक कर दें तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा ये अनुभव रहा, जस्टिस जे एस वर्मा कमीशन 2012 में बैठी थी और मैं भी उसका अंग था। हम लोगों ने ये सर्वे करके देखा, लगभग 18,000 बीएड कॉलेजेस हैं हमारे देश में। 10,000 कॉलेजेस बिल्कुल पैसे पर डिग्री बेच रहे थे, कोई टीचिंग लर्निंग नहीं। I visited a number of colleges across Maharashtra and part of UP, and there was absolutely no teaching. So Justice J.S. Verma Commission has mentioned there are nearly 10,000 colleges which sell degrees for money. There is absolutely no teaching learning. This has been quoted in the policy. There is one good thing about this policy, besides many other, it's very honest. ये एक्सेप्ट करता है हमें क्या कमियां हैं। आप 86 से इसको कंपेयर करिए, 86 की पॉलिसी क्या है। हम आज बोस्ट करते हैं कि हमारे ग्रेजुएट्स अमेरिका के सब बड़े कंपनियों के सीईओ हैं, फलाना हैं। वो राजीव गांधी की पॉलिसी थी जो वेस्टर्न ट्रेन थे, और वो भारत को सिलिकॉन वैली का सर्वर बनाना चाहते थे, और वही हुआ है। आपने कहा कि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, उसमें लोगों को आगे बढ़ाएंगे। आपके डेटा है मेरे पास, जब आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट खुले, 10 साल तक टॉप 30 स्टूडेंट सब के सब आईआईटी पवाई गए, उसमें से एक भी ग्रेजुएट भारत में नहीं है, उसमें से एक भी ग्रेजुएट भारत में नहीं है। तो ये क्यों हुआ? 86 में लास्ट टाइम था जो किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी थी, इसलिए प्रधानमंत्री एक अपना पॉलिसी लेके आए थे, एक युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री जो आज तक भारत को मिला है। 2014 11 जून नरेंद्र मोदी पहली बार संसद को एड्रेस किए हैं। जरूर सुनिए उस भाषण को, लगभग 54 मिनट का भाषण है प्रधानमंत्री का। यह प्रधानमंत्री बदलता है पूरे सीन को। ये पहले ही अपने भाषण में कहते हैं 70% आबादी गांव में रहती है। यही तो गांधी कह रहे थे, गो बैक टू रूट्स, गो बैक टू विलेजेस, सर्व देम। और यही तो ब्यूटीफुल ट्री है जो गांधी ने कहा कि आपने हमारे सुंदर वृक्ष का जड़ खोद दिया और उसको फिर ढका नहीं, पानी नहीं पटाया, इसीलिए वो ब्यूटीफुल ट्री सूख गया। नरेंद्र मोदी 11 जून 2014 को यही कहते हैं। 70% लोग गांव में रहते हैं, 70% बच्चे गांव में हैं, वहां उनको न स्कूल है न शिक्षक है। क्या हम तकनीक के माध्यम से इन तक नहीं पहुंच सकते हैं? 1.5-2 साल के अंदर अंदर हमने स्वयं लगाया और हमने स्वयं प्रभा भी चलाया। ये केवल गांव तक पहुंचाने की बात थी। आज स्वयं दुनिया का सबसे बड़ा मूक प्लेटफॉर्म है। ये प्रधानमंत्री की सोच थी कि गांव तक जाओ, उनको पढ़ाओ। कंप्यूटर साइंस पढ़ा के तो हम सिलिकॉन वैली को सर्व कर रहे हैं। We need computer scientists, but we don't need prepare computer scientists to serve America and Germany and Britain. We need them to serve India. Let us first serve our country, and that's what this policy intends to do. ये इंडिया सेंट्रिक है। इसीलिए 7 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया आफ्टर द पॉलिसी और कहा कि ये शिक्षकों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, शिक्षक ही बदलेगा और ये पॉलिसी आपकी है। हमने पॉलिसी दिया है, यू हैव द विल ऑफ द गवर्नमेंट, यू हैव माई सपोर्ट, but it is your policy, you have to implement. This policy is a teacher-centric policy. In school education, read chapter 5. In higher education, read chapter 15. It's teacher-centric. ये देश अगर सोने की चिड़िया था, इतना बड़ा था, महान था, 1700 में 27% दुनिया के ट्रेड में मेरी शिरकत थी। वो इसलिए क्योंकि गुरु ही सेंटर स्टेज था, और वही ये पॉलिसी करना चाहती है, और यही गांधी भी कहते थे। मैं लास्ट कमेंट ये करके खत्म करूंगा कि autonomy of institutions is very important. Autonomy of institutions is very important, and I believe Gandhi always believed, let the teacher decide. In 2014, when we had a new government, and Delhi University had experimented with 4-year degree program, we made a mistake. The government made a mistake by pressurizing Delhi University to reverse it. I remember writing an editorial in a newspaper, and I had quoted the government decision, the Kanti Viswas Committee report of the CAPE. सरकार ने एक केप कमेटी बैठाई थी, सब कमेटी कांति विश्वास के चेयरमैनशिप में।
वो बड़ा ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है। और ऑटोनॉमी पर क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन, इस पर गवर्नमेंट रिपोर्ट है, एक्सेप्टेड है केब के द्वारा। दैट्स द हाईएस्ट एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द नेशन, एंड दैट पॉलिसी हैड सेड every university must be autonomous, and that is why they have separate acts. They must experiment. नेहरू का पहला भाषण सुनिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आफ्टर इंडिपेंडेंस, द कन्वोकेशन स्पीच टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1950, and he said university stand for humanism, for tolerance, for trust with reason and ideas. Why did we reverse Delhi University 4-year degree program? The government had a policy, the government had reiterated it, but still government reversed it, and we all remember that the government is not shy of accepting its defeat or accepting the mistakes, just as we had made mistakes in opening B.Ed colleges, and that is mentioned in 15.2. The policy accepts the 4-year degree program was the policy that should have been, and we should go ahead. शायद इस ऑगस्ट हाउस में कम ही लोगों को पता होगा, राधा कृष्णन कमीशन ने 1950 में यही कहा था कि 4-year प्रोग्राम होना चाहिए। पढ़िए जरा राधा कृष्णन कमीशन। एक अच्छी बात है इस देश की, हम कमीशन बैठाते हैं, रिपोर्ट लाते हैं, उसको अलमीरा में बंद करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, और कोई कर देता है तो उसको लौटा लेते हैं। दिस पॉलिसी इज वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग. It has accepted we made a mistake by reversing the 4-year degree program, and we must reintroduce it, and now it will be the national policy. I believe this policy is a Gandhian policy. गांधी ने यही तो कहा था हिंद स्वराज में, जिसको कि अभी परम आदरणीय दिनेश सिंह जी ने कहा। हर बार वो हिंद स्वराज का ड्राफ्ट बदल देते थे। किसी ने पूछा कि गांधी आप तो ये क्या करते हैं हर बार बदल, कहे देखो हम इवॉल्विंग हैं और हम इवॉल्विंग ही होने चाहिए हमको, इसलिए हर बार हम कुछ नया सीखते हैं और अपनी पुरानी बात को बदल देते हैं। तो जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हमको ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी को लागू करना चाहिए, और यही तो विद्या परंपरा रही है भारत की। ये शिक्षा नीति भारत की हिंदू परंपरा पर, हिंदू रिलीजन नहीं, हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूं, हिंदू परंपरा पर आधारित है, हिंदू पॉलिसी है। और मुझे लगता है कि ये गांधी का भी यही पॉलिसी था कि हिंदू भारत होना चाहिए, पुनः हिंदू धर्म, रिलीजन नहीं। बहुत बहुत आभार सर कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. I think we've got a fairly good perspective, so this is going to be our second round and probably the final round, where I would like each one of our esteemed panelists to comment on, as we seem to understand the national education policy, there are 3 or 4 things that seem to sort of be a realm of concern in education in India. All of you have mentioned some of them, but a kind of reiteration. Number 1, why are Indian universities not doing well? Do you think that national education policy can help make them perform better at a global level? When I say global, I'm not just talking of rankings. If you look at how institutions perform in terms of how they contribute to society, NEP says this, Mahatma Gandhi said that. How do we measure, first of all, what is the contribution of Delhi University to society? मुझे तो कोई मापदंड दिखता नहीं है, मुझे तो कोई तरीका नहीं अभी तक किसी ने दिखाया कि this is how you could measure कि आपने इकोनॉमी में, वेल-बीइंग में, साइंटिफिक थॉट पे। एक तो ये। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल हेड्स जो होते हैं, you're all vice chancellors, all of you have led big institutions. What is the role of an institutional head? क्या उसको हम NEP के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, is it that you have to have 10 years of experience, you have to have a PhD, do you have to have led some experience in some institution? जितने वाइस चांसलर्स को मैंने माना है कि आदर्श रहे किसी प्रकार से, मैंने अपने अनुभव में जितना सीखा, उनमें से कोई पीएचडी नहीं था। हंसा मेहता बड़ौदा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी 1900, मेरा अनुमान है कि 1950 के आसपास बनी, सरदार पटेल ने बनाया उनको। She did not even have a master's degree, मगर मैं सरदार के विजन को देखता हूं, what a great man.
उन्होंने फैसला किया कि बड़ौदा में एजुकेशन के ट्रेडिशंस कुछ ठीक ठाक हैं, कॉलेज चल रहा है अच्छा, बट दे नीडेड अ यूनिवर्सिटी, और हंसा मेहता को उन्होंने बनवाया। हंसा मेहता के पास मास्टर्स डिग्री नहीं थी, 9 वर्ष रही वाइस चांसलर, और बड़ौदा यूनिवर्सिटी आज भी उन्हीं का दिया खा रहा है। दैट मोमेंटम दैट शी गेव, I don't know how many of you are aware, she was the first woman vice chancellor in the world. The first woman vice chancellor in the world. वर्ल्ड में कोई औरत किसी यूनिवर्सिटी की हेड बनी ही नहीं थी, सरदार पटेल ने हंसा मेहता को बनाया। पढ़ी लिखी नहीं थी आज के दृष्टिकोण से, यूजीसी तो उनको कॉलेज में पढ़ाने नहीं देगा, वाइस चांसलर कहां से बनने देगा। बट शी ब्रॉट Baroda University की Faculty of Fine Arts was globally renowned because of what she did there. The Faculty of Home Science was globally renowned. In 1962, the American Mathematical Monthly writes an article कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का अच्छा करिकुलम मैथमेटिक्स में देखना है, ये अमेरिकन मैथमेटिकल मंथली लिख रही है 62 में, तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी का देखो। और वो पढ़ी लिखी नहीं थी आज के दृष्टिकोण से। तो मैं चाहता हूं, मैं तो औरों को भी देखा है, मालवीय जी के पास कौन सी पीएचडी डिग्री थी, मॉरिस ग्वायर जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय बनाया, उनके पास भी कोई पीएचडी डिग्री नहीं थी, वो तो एकेडमिक सीन में थे ही नहीं, वो तो चीफ जस्टिस थे इंडिया के। उन्होंने ही विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया हमारा। उसके पहले हम ऐसे ही थे, एग्जामिनिंग बॉडी, यही सब अनाप शनाप काम करते थे। वी बिकेम अ नॉलेज सेंटर, वी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। गांधी जी इतना एजुकेशन के बारे में बोले, मुझे उनके पास तो यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री ही नहीं थी। सो आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस थर्ड थिंग कि वाकई क्या हमारा टीचर जो है ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है? इज देयर सम वे टीचर का रोल पॉजिटिव भी रहे, कंस्ट्रक्टिव भी रहे, लेकिन इस तरह से रोड ब्लॉक बन के न रहे? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, गांधी और इन इश्यूज को लेकर if you could talk about this, where will our universities go? Are we headed in the right direction? I start with Professor Umesh Rai. थैंक यू सर। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा और खुद आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं बहुत सारी चीज़ें। एक एग्जाम्पल के तौर पर रख रहा हूं, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट, ऑटोनॉमी। And when I am saying autonomy, in letter and spirit I am saying autonomy. किसी भी संस्था को अगर आप नियम कानून में इतना बांध देंगे तो संस्था का ग्रोथ नहीं होगा। संस्था उसी नियम कानून के दायरे में सिमट करके रह जाएगी और फाइनली जो है उसका अंत हो जाएगा। एंड here I don't see this point is not properly addressed. We are talking about the autonomy, but when that question comes for implementation of the autonomy, you will get with so many 100 rules. With that, it would be difficult to implement the national education policy in letter and spirit. We would implement national education policy, we would not be able to implement in its letter and spirit, in its totality. तो सही माने में संस्थाओं को थोड़ा छूट दे दीजिए। इतना नियम कानून के दायरे में बांधेंगे तो उसकी संभावना छीण होती जाएगी और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। पहले दूसरी चीज, मैं अभी आपको सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है उससे कि हंसा मेहता का एग्जाम्पल दिया है, अन्य लोगों का दिया है। मैं तो और सर आप ही हमको बताते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन की स्थापना किए विश्वविद्यालय की, और वो तो किसी यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़े थे। सर ही हमको बताए कि गांधी जी के पास लॉ की कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, लेकिन लॉ की डिग्री उनको प्रैक्टिस के आधार पर मिली थी। तो क्या हम सोसाइटी
के लोग, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं या अन्य क्षेत्रों से हैं, क्या हम उनको एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में या फैकल्टी के रूप में लाने के लिए तैयार हैं? सर, एक काम हमने अभी किया है एकेडमिक काउंसिल में 3 दिन पहले, जम्मू यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि सारी सुविधाएं जो एक फैकल्टी को मिलती हैं, उन सुविधाओं के साथ हम फार्मर भी हमारा होगा या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, उसको हम विजिटिंग प्रोफेसर अपॉइंट करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी में। उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी काउंसिल is supposed to be chaired by the Lieutenant Governor Saab, so that would be taken care there. But again, the problem we are expecting from the bureaucrats. They अभी वाइस चांसलर चेयर कमेटी का मीटिंग नहीं करेगा, बल्कि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी चेयर करेगा मीटिंग। ये गिरावट जो आई, उसके लिए कुलपति भी जिम्मेदार हैं, शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। जो हमको जो नैतिक धर्म जिसके आधार पर वो बल मिलता था, जो काम हमको ईमानदारी के साथ करना होता था, वो हमने नहीं किया, जिसके कारण कि ये सारी चीजें आई। अभी आप सोच सकते हैं, सर एग्जाम्पल दे रहे थे अंशा मेहता का, और यूजीसी का एक नियम है, 10 साल का प्रोफेसर होगा तब वो वाइस चांसलर होगा, और तब तक वो मरने के कगार पर होगा। वो उससे उम्मीद करते हैं कि वो परिवर्तन लाएगा। अरे वो टाइम पास करेगा, अपना परिवर्तन नहीं लाएगा। परिवर्तन लाना है जिसमें पोटेंशियल हो, वो असिस्टेंट ही प्रोफेसर क्यों ना हो। अगर उसके में पोटेंशियल है, he or she can lead the institution, provide the leadership, I think he or she should be given that opportunity. बट नहीं, हमने बांध करके रख दिया कि ये क्वालिफिकेशन वाइस चांसलर का क्वालिफिकेशन तो लीडरशिप प्रोवाइड करना है इंस्टीट्यूशन को। एंड अगेन कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहां पढ़े थे, बट उन्होंने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। मालवीय जी के पास कोई पीएचडी की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो मेरा आपसे सर जो है कि हम अगर कहीं किसी लेवल पर ये कम्युनिकेट कर सकें कि संस्थाओं को थोड़ा सांस लेने दिया जाए खुली हवा में। अगर हम संस्थाओं का ग्रोथ देखना चाहते हैं, तभी शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और तीसरी चीज जो हमारे मित्र ने प्रोफेसर बिशन लाल जी ने शेयर की थी, रेजिंग ऑफ फंड, if that opportunity is given to the university would be able to raise that fund. But again, CAG की ऑडिट होगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी की ऑडिट होगी। इतने ज्यादा फाइनेंस के रूल्स हैं कि उस रूल का पालन करते करते पता लगा एक एकेडमिक सेशन ही निकल जाता, दूसरा एकेडमिक सेशन आ गया। और अगर कोई वाइस चांसलर उसको करना चाहता है तो इंक्वायरी कमेटी फेस करता है। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय 2012 जब उस समय जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू किया गया था, तो सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे, ईच स्टूडेंट वाज एम्पावर्ड विथ आईटी, और उसको लैपटॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खरीद के दिया था। Each student, 54,000 students, all the colleges were made Wi-Fi facilities. और हम लोगों के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई कि आप लैपटॉप कैसे खरीदे। आपने इस बजट हेड से नहीं खरीदा, इस बजट हेड से खरीद लिया। और 6 महीना हम उसी की जवाब देते रहे। उसके बाद 2 साल सीएजी के ऑडिट झेलते रहे। सब कुछ डीजीएस एंड डी रेट से खरीदा गया था, कुछ भी सब जान रहे थे। देयर इज नो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, बट डाइवर्जन ऑफ फंड पर हम इंक्वायरी झेल रहे थे। तो कौन वाइस चांसलर इस तरह से अपनी गर्दन को दे करके और काम करेगा?
तो थोड़ी छूट जब तक नहीं दी जाएगी, मुझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट लागू करना संभव नहीं दिखता है। ये एक चीज सर। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि आपका जो सेकंड पॉइंट था टीचर्स को लेकर के, स्टम्बलिंग ब्लॉक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जब जब परिवर्तन की बात आई है तो शिक्षक ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है समाज में। लेकिन जब शिक्षा में परिवर्तन की बात आती है तो वो शिक्षक जो समाज में परिवर्तन की बात तो करता है, लेकिन शिक्षा में जब परिवर्तन की बात आती है तो सहर्ष स्वीकार नहीं करता है। रिफॉर्म्स लाना जो है हर एक के लिए बड़ा मुश्किल होता है, हर एक के लिए, और उसमें शिक्षक भी है, क्योंकि वो एक परंपरा से चला आ रहा है, उसी परंपरा से वो पढ़ा है और उसी परंपरा से वो पढ़ाना चाहता है। तो पेडागॉजी को बदलना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ये दोनों चीजें होंगी। और मैं एक एग्जाम्पल फिशरी का दिया था, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जब हम कहते हैं, अब मैं अगेन अपने ही डिसिप्लिन का दूंगा ताकि दूसरे डिसिप्लिन के लोग नाराज नहीं होंगे, तो इसलिए मैं अपनी डिसिप्लिन की बात करता हूं, ज्वालजी की। इंटमॉलजी एक, वहां हम पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेस्ट मैनेजमेंट, और वो स्टूडेंट्स धान और गेहूं के पौधे में अंतर नहीं करना जानते हैं, और हम धान और गेहूं का पेस्ट पढ़ाते हैं। आप सोच सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि हमको आपको पूरा बदलना है तो वो रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो हमको टीचर्स की रिगरस ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिगरस, व्हेन आई एम सेइंग रिगरस, तो आप मान के चलिए 7 to 10 years रिगरस ट्रेनिंग हम करते जाएंगे, देन आई थिंक शायद माइंडसेट जो प्रोफेसर बेचनलाल जी बात कर रहे थे, वो माइंडसेट तैयार हो जाएगा कि हमको अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड. So with these words, sir. Thank you. Thank you. Professor Bechenlal, on the same issues, your own perspective, I would look forward to that. सर, पहला आपका था कि कैसे विश्वविद्यालय के आउटपुट को जज किया जाए। ये रियली बहुत ही डिफिकल्ट इशू है। यदि हम अपने पुराने ज्ञान परंपरा की बात करें तो वहाँ से उस स्कूल से, क्योंकि एक तो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर थे, समाज आधारित थे, वो सरकार आधारित नहीं थे, उनकी एक सिस्टम था, उससे वो निकलते थे और उनमें से कैसे कैसे लिगेसी निकले हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को देख करके परहैप्स वो स्कूल्स, अब जो विभिन्न गुरुकुल थे, वो उनका जजमेंट होता था। आज का परपेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सर। पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं कुछ पिछले 2-2.5 साल या 2-2.5 वर्ष, या कह सकते हैं कि करीब 700-800 वर्ष के बीच में, सचमुच हम लोगों का माइंडसेट बहुत बदल गया है। इस कारण से समस्या है। यदि उससे बाहर निकलेंगे तो जजमेंट खुद इंडिविजुअल करने लगेगा और इंस्टीट्यूशन की रेटिंग हो जाएगी कि हम कहाँ से निकले हैं। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ सर। पहले टीचर्स का जो कमिटमेंट था, प्रोफेसर मदन सर यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ एक बहुत रिनाउंड जियोलॉजिस्ट, उनके अंडर पीएचडी भी किए, प्रोफेसर ए.वी. मिश्रा साहब थे। वो जब उनका रिटायरमेंट आया, वो रजिस्ट्रार भी कुछ दिन तक रहे हमारे विश्वविद्यालय में, और जब उनको रिटायरमेंट था तो यूनिवर्सिटी ने उनसे कहा कि आप अपना सक्सेसर खोज के जाइए। और वो सर पूरा घूम घूम करके जाते रहते थे, एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है, वाइवा है। उस दौरान वो जहाँ भी जाते थे अच्छे सेंटर पर, तो बात करते थे लोगों से कि भाई मुझे एक अच्छा व्यक्ति दो। यूनिवर्सिटी ने उतनी छूट दी थी। उसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, किसी तरह से ले आए,
और उन्होंने जो क्लासिकल जुआलजी था, जो डिस्क्रिप्टिव जुआलजी था, उसको मॉडर्न जुआलजी में बदला, और बहुत कुछ आउटपुट हमारे आज जो भी जुआलजी बीएचयू का दिखता है बिकॉज ऑफ दैट। तो वो एक लिगेसी खोजने की जो परंपरा है वो बंद हो गई है। सौम्य जी ने कहा कि हम रूल से बंधे हुए कि ये एपीआई होगा, ये स्क्रीनिंग होगा, ये इंटरव्यू होगा, और वो इंटरव्यू परफॉर्मेंस वैसे देंगे। और शायद सर इसको चेंज करना, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हम कह रहे हैं, कि मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका मिसयूज के इतने चांसेस हैं, हो रहे हैं, इवन रूल्स में भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि रूल्स है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, रूल्स में भी बहुत मिसयूज हो रहे हैं। और ये फिर मैं उसको माइंडसेट पे ले जाता हूँ, और जब तक एजुकेशन समाज से सेंट्रिक नहीं होगा, समाज आधारित तो समाज सेंट्रिक, तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट्स के अपने रूल्स हैं, उनके फंड्स हैं, तो उनको ऑडिटर है, उनको टैक्स पेयर मनी है, उनको बताना है कि प्रॉपरली यूज हो रहा है, तो वो करेंगे। इसलिए हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हमको एक नया सोसाइटी डिवाइस करना होगा, जो हमें लगता है वर्षों लगेगा, यदि शुरू करेंगे तब। ये हर लेवल पर, इन एडिशन टू देयर डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग एंड प्रैक्टिस, हमको ये पैरेलल एक धारा चलानी पड़ेगी, और ये एक रिगरस सब काफ़ी चलेगा, एक आध 2 डिकेड, तब शायद वो चेंज की संभावना है। दूसरा सर आपका सवाल था कि टीचर्स का सचमुच टीचर्स नहीं है, वो स्टैम्पलिंग ब्लॉक जिसे कहे वो नहीं है। अल्टीमेटली वो ही डिलीवर कर रहे हैं, जो भी बुरा भला कर रहे हैं चीज़ें। लेकिन सर टीचर्स को इवेल्युएट को खुद को करना पड़ेगा सर। मैं आज जो भी हूँ, मैं अपने टीचर्स को क्रेडिट दे रहा हूँ। वो कक्षा 8वीं में थे, एग्रीकल्चर टीचर थे, एग्रीकल्चर पढ़ाते थे। पूरा पढ़ाने के बाद गर्मियों की छुट्टी में वो साइकिल से जाते थे, और लिस्ट रहती थी बच्चों की, गांव-गांव जाते थे, गार्जियन से पूछते थे कि ये लड़का आपका क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बच्चे से मिलते थे, घर नहीं जाते थे 2 महीने के लिए। और एक ऐसा उन्होंने, उनके अंदर वेव था, सारे उस क्षेत्र के जितने भी लोग थे उनके लिए समर्पित थे। और आज भी शायद हम लोग अब प्राइमरी स्कूल के टीचर से जितना प्रभावित हैं, अपने हायर एजुकेशन टीचर्स प्रभावित नहीं है। तो टीचर को तो अपने को इवेल्युएट करना पड़ेगा सर, अपने मापदंड बनाने पड़ेंगे, इवेल्युएट करना पड़ेगा। और जब तक वो इवेल्युएट करके अपने को मॉडरेट नहीं करेगा, तब तक उसको दोनों रूप में देखेंगे। मैं आपको एक बहुत ही इसको अन्यथा न ले सर, ये जो 6 पे कमीशन आई थी, तो मैं एक सब्जी वाले की दुकान पर सब्जी लेने गया था। वह एक दूसरे प्रोफेसर साहब सब्जी ले रहे थे, तो वो जो उससे कुछ मोल भाव होता है करते हैं। वो जो सब्जी बेचने वाला है उसका कमेंट एकदम स्टनिंग कमेंट था, मैंने हक्का बक्का रह गया। उन्होंने जब कहा तो कहा गया, अरे प्रोफेसर साहब अभी भी आपको घटाई है, बिना पढ़ाए आपको लाख रुपया मिल रहा है और आप मोलभाव कर रहे हैं। ये परसेप्शन है हमारा, ये कितना। उसके बाद फिर हमने उसको थोड़ा डांटा। वो बात अलग है कि ठीक है उसने माफी मांगी नहीं हमेशा नहीं, लेकिन ये हमारा परसेप्शन है। हम क्लास में नहीं जाएंगे। अब हम जब बोल रहे थे तो उमेश भाई ने मेरा पैर दबाया है लेकिन मैं सचमुच आई एम पेन्ड एज ए टीचर। कोविड पीरियड में जब ऑनलाइन की बात आई तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट में, उसमें एट दैट टाइम आई वाज इन बीएचयू, उन्होंने कहा कि मैं एक कैमरा खरीदता हूँ, टीचर एज इफ प्रिज्यूमिंग कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट, आप पढ़ाइए, रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग को हम अपलोड करेंगे और वो लड़का पढ़ेगा, फिर उसको टाइम हम लोग फिक्स करेंगे, उसमें वो इंटरेक्ट करेगा। अनफॉर्चुनेटली केवल 3 टीचर है सर। उन्होंने कैमरा खरीदा, उसके लिए पूरा एक सेटअप तैयार किया, एक रूम तैयार किया। हम कहाँ हैं? तो ये तो कहना पड़ेगा कि हमको ये और ये जिस दिन टीचर चेंज हो जाएगा,
और मुझे कई बार लगता है कि हम सरकार पर डिपेंडेंसी कम करेंगे तभी होगा। सरकार की डिपेंडेंसी पर करेंगे तो सरकार हमसे क्वेश्चन पूछेगी, रूल बनाएगी, वो उनकी बाध्यता है, ये उनकी बाइंडिंग है। तो सब ये भी बहुत ही परप्लेक्स्ड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन टीचर्स को थोड़ा सा मदन जी समय का इंतजार कर रहा है। टाइम हो गया क्या? ठीक है सर, ओके। सॉरी अब इतना जो है आनंदमयी चल रहा था कि, तो मैं संक्षिप्त में चाहूंगा आप दोनों से, बहुत ही संक्षिप्त में, तो फिर हम समाप्त करेंगे। आपने ये कहा कि हमारे पास कुछ मापदंड नहीं है जिससे हम यूनिवर्सिटीज़ को असेस कर सकें। मैं इसके बारे में सोच रहा था और मेरे मन में दो ख्याल आ रहे थे कि सबसे बड़ा मापदंड जो है हमारा, हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो हमारे पास पैरामीटर्स होने चाहिए कि हम जो अपना मेन प्रोडक्ट है, जो एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बन के निकलता है, उसको एसेस करने के लिए कि जो चीज़ हमने एनविसैज की थी जब उसका दाखिला हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो वो प्रोडक्ट बाद में बन के निकला है, उसको उस मापदंड पे तोलने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि वो हम अपना अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है वो हमें ये देखना है कि अंत में हम ये चाहते हैं कि समाज के अंदर हम कितना बदलाव कर पाए हैं, कि जो विद्यार्थी जब एक पास करके सोसाइटी के अंदर आते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर वो क्या बदलाव कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर बन के निकलता है या इंजीनियर बन के निकलता है या एक लॉ ग्रेजुएट बन के निकलता है, तो उसने क्या बदलाव किया। मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें हैं, अगर इसके मापदंड हम देखें तो बाकी चीज़ें ऑटोनोमस स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी या चीज़ें हैं वो सारी फैसिलिटेटर्स हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो टीचर्स के लिए, टीचर्स का रोल जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी एनविसैज किया गया है कि मेनली एज ए फैसिलिटेटर है, कि ये जो है हमें स्टूडेंट सेंट्रिक ज़्यादा रखना है, कि स्टूडेंट्स का जो रेट ऑफ लर्निंग है वो हर एक का अलग अलग होता है, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, उसके हिसाब से ही टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और रेगुलर टीचिंग प्रोग्राम एक टीचर्स के लिए भी होना चाहिए, और जिसका प्रावधान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी किया गया है कि टीचर्स के लिए रेगुलर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम समय समय पर होने चाहिए। तो एक जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो सब हम स्टूडेंट्स के साथ ये सोचें कि हम को लर्नर्स हैं, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में उतना डिवाइड नहीं होना चाहिए। बस मुझे यही कहना है जी। I have so much to say with you, but I'll try to be quick. What do we expect our institutions to be? I'm reminded, प्रश्नोपनिषद पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा या उसकी कहानी जानते हैं। जब 5 कुलगुरु पिपलाद के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य एक्सेप्ट कर लीजिए, तो पिपलाद कहते हैं कि तुमने ये कैसे तय कर लिया कि मैं तुम्हारा गुरु हो सकता हूं, और मैं कैसे जान लूं कि तुम मेरे शिष्य हो सकते हो? 1 साल मेरे साथ रहो और फिर तुम तय करना कि मैं तुम्हारा गुरु हो सकता हूं कि नहीं, और मैं तय करूंगा कि तुम मेरे शिष्य हो सकते हो कि नहीं। यहां गुरु और पात्र का चुनाव होना था। पात्र तय नहीं कर सकता है कि आप मेरे गुरु बन जाइए, और यही कहानी सत्यकाम की भी थी। लेकिन यह तो हमारी परंपरा थी, इसको तोड़ा मैकॉले के मिनट्स ने, जो हम हर बार कोट करते हैं। मैकॉले ने क्या कहा, हमारी विद्या की परंपरा क्या थी जिसको कि खत्म करने की जरूरत थी। बड़ा लिटरेचर है जो कहता है मैकॉले को कि भारत की बड़ी समृद्ध परंपरा है, इसको तुम बदल दो मत, ये देश सोने की चिड़िया थी, इसलिए क्योंकि इसकी शिक्षा की, विद्या की परंपरा थी, इसको अगर अक्षुण्ण रहने दो तो ही तभी दुनिया का भला है। मैकॉले साफ कहता है। हम सब जानते हैं विद्या का क्या डेफिनेशन है, वाई एजुकेशन, एजुकेशन का डेफिनेशन क्या है, लेकिन मैकॉले साफ साफ कहता है वी विल इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन दिस कंट्री बिकॉज दे विल serve our interest. They will be interpreters between us and the millions whom we govern. They will be translators. And finally he concludes, this will help us prolong our rule in India. तो विद्या का, शिक्षा का डेफिनेशन ही मैकॉले ने बदला, और
हम पूरा जो बहस आज कर रहे हैं तो उसी को कर रहे हैं। उसने ये कहा कि जो अंग्रेजी पढ़ेगा उसको हम नौकरी देंगे, तो डिग्री को जॉब से जोड़ दिया। हम उसको वापस करना चाह रहे हैं इस पॉलिसी से। मैं आपको बताया कि मैं इस पॉलिसी को रियली जिया हुआ 7 साल 8 साल। हम इसको उलट रहे हैं। कैसे उलट रहे हैं? सारी मातृभाषाओं में हो रही है शिक्षा। 150 मातृभाषाओं में हम प्राइमरी एजुकेशन देना शुरू करने जा रहे हैं। 40 में हमने काम कर लिया है। 7-8 दिन में प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे नेशन को। 27, 28, 29 को करेंगे एड्रेस और बताएंगे वो। और हम 150 भाषाओं में प्राइमरी एजुकेशन करेंगे ताकि सारे बच्चे स्कूल में हों। तो जो मैकॉले ने किया था उसको उल्टेंगे। और कहानी मैं हर चैप्टर पर जा सकता हूं, लेकिन जो सर का क्वेश्चन है, autonomy of the institution is supreme and this policy accepts it. It says in chapter 19, read chapter 19 very carefully, it's just about a page. It says every institution will have its board of governors. Not that we don't have in the university acts today. It's always said the vice chancellor is the chief or will be the chief executive officer of the institution, and he or she will decide. However, politics prevails. Politics prevails. एक्ट से तो आप ऑटोनोमस रखे हैं, टीचर भी ऑटोनोमस है, वाइस चांसलर भी ऑटोनोमस है। I know of a case in Delhi University. Minister for Education was in the convocation address and he was said to sit in the audience because there was no position for him on the stage. हमारी परंपरा रही है, पढ़ो शिक्षावल्ली। कन्वोकेशन क्या है ये हमने दुनिया को दिया है, हम बताए हैं दुनिया के कन्वोकेशन क्या है। वाइस चांसलर कहते हैं I authorize you, I hold you worthy of the degree that I award on you today. Now you can go and practice. ये था हमारा वाइस चांसलर। हमने कहां पहुंचा दिया? लेकिन चैप्टर 19 उसको उलटने की बात कर रहा है कि हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे और एक जो चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा वही अपना सक्सेसर भी चुनेगा। लेकिन मैं बात यहां कह के खत्म करूंगा। I've never been a vice chancellor. It was quoted that I am pro vice chancellor at IGNOU. I am not. I am only a professor at IGNOU. I have been chairman of National Open School. चैप्टर 19 को इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। एक्ट को अगर हम केवल एक्ट्स को ही हम बहाल कर दें तो यूनिवर्सिटीज ठीक चलेंगे, लेकिन ये होगा नहीं हमारे देश में। मैं एक स्वयं सेवक हूं, इसलिए मेरी चिंता केवल भारत है। एक मुझे याद आ रहा है, ये बोलना जरूरी है, हम लोग एक प्रज्ञा प्रवाह का राष्ट्रीय सम्मेलन किए थे। वहां परम पूज्य सर संचालक जी से पूछा गया कि आपका बीजेपी से क्या संबंध है संघ का, तो उन्होंने साफ कहा था वो एक प्रकल्प है जो काम करती है राजनीति के क्षेत्र में। सरकारें आएंगी जाएंगी, जो हमारे विचार को मदद करेगा हम उसी के साथ हैं। तो मैं एक स्वयंसेवक हूं, मैं केवल विचार के साथ हूं और राष्ट्र के साथ हूं। वो क्या है? संस्थाओं को स्वायत्त करिए, जिसको भी आप कुलपति बनाते हैं। और अभी बात बहुत हुई है, हंसा मेहता जी की बात हुई, दिनकर जी को बनाया गया था भागलपुर का वाइस चांसलर। वो बीए थे केवल और बहुत हंगामा हुआ था। एक बीए को बना दिया, वो पीएचडी डिग्री साइन करेगा और एक्सप्रेशन यही था, अ पर्सन ऑफ एमिनेंस वुड बी द वाइस चांसलर। हमने उसको बदल दिया, काफी बार बदल दिए, अ पर्सन ऑफ एमिनेंस ओनली शुड बी वाइस चांसलर। लेकिन जब ये होगा तो सर्च कमेटी मेंबर या जिसको भी ये दायित्व दिया जाएगा वो अपने भतीजे को ही सबसे पर्सन ऑफ एमिनेंस खोजता है इस देश में। हम कई बार पॉलिटिकली करेक्ट होने में ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, हमको ये बोलना चाहिए। यही तो परंपरा रही, प्रश्न भी करो उत्तर भी मिलेगा। हम प्रश्न कर रहे हैं सरकार से, ये पॉलिसी मेरी है, ये देश मेरा है, फिर भी मैं प्रश्न कर रहा हूं क्या चैप्टर 19 लेटर एंड स्पिरिट में लागू होगा? और अगर होगा तो जो आज परेशानी मैं देख रहा हूं दो कुलपतियों का इस प्लेटफॉर्म से, प्रोफेसर उमेश सिंह जी का और बिचरलाल जी का वो नहीं खत्म होगा अगर वो नहीं हो। एक लंबा डिबेट है, मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर एंड अर्जुन सिंह एज मिनिस्टर, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च कैसे बन रहा था, क्या बन रहा था। जो नेशनल नॉलेज कमीशन प्रधानमंत्री ने बना लिया था उसका एक भी रिकमेंडेशन मिनिस्टर नहीं माना अर्जुन सिंह, क्योंकि वो कहते थे आप कौन, प्रधानमंत्री हमको होना था, आप बैकडोर से घुस गए और मंत्री मैं हूं एजुकेशन का कि आप हैं। तो इन्होंने भेजा था रिकमेंडेशन नेशनल नॉलेज कमीशन से और उसको अर्जुन सिंह ने पूरा स्कटल किया और कहा मैं चेयर करूंगा CHER की मीटिंग। वो डॉक्यूमेंट है पब्लिक डोमेन में, अच्छी बात है, उसको पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है सर कि हम
पॉलिसीज अच्छे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अच्छे बनाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। मेरा मैसेज क्या होगा इस यंग ऑडियंस के लिए, एंड विच इज़ वेरी वेरी डैमेजिंग, विच इज़ वेरी वेरी डैमेजिंग। इफ़ यू हैव एनी वर्थ, गो एंड एक्सपीरियंस इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। देश को छोड़ो, मैं स्वयं सेवक हूं, फिर भी बोल रहा हूं, देश छोड़ो, जाके एक अच्छी यूनिवर्सिटी को देख के आओ, तब तुमको पता चलेगा कि शिक्षा क्या है और संस्था क्या होती है और विश्वविद्यालय की परिभाषा क्या है। हमने पूरा का पूरा स्कटल कर दिया है यूनिवर्सिटीज को, और हम नहीं बना पाएंगे अगर हमने इसको पूरी तरह से नहीं बदला। कुलपति को कुलपति होना चाहिए और वही हेड होगा। लास्ट एक बात कह के मैं खत्म करूंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे पिताजी पुलिस में थे और एसपी भागलपुर थे। बड़ा नामी कॉलेज है टीएनबी कॉलेज, उसके प्रिंसिपल थे सुदर्शन प्रसाद सिंह, शायद फिजिक्स के लोग जानेंगे। इमरजेंसी का दौर था और आंदोलन कर रहे थे लड़के, तो हुआ कि भाई अंदर बलवा हो रहा है। मेरे पिताजी ने फोन किया प्रिंसिपल को कि मैं घुसना चाहता हूं, अंदर आना चाहता हूं, आ सकता हूं। आज ये बनेगी क्या स्थिति? तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी संस्था का अध्यक्ष क्या होना चाहिए। अगर आप वो नहीं होने दिए जो पिपलाद था, तो भूल जाइए आप संस्थाएं बनाएंगे। इसलिए आपको जोर से बोलना पड़ेगा और राष्ट्रहित में बोलना पड़ेगा। संस्थाओं को बचाओ, मर रही हैं संस्थाएं। Thank you. Thank you very much. Well, all good things have to come to an end. I'm sorry, I had promised that there will be an interaction with the audience, but we have taken up so much time that I think there is no time left for interaction with the audience. I would just like to make very briefly concluding remarks. That is my privilege. Madanji will try and override me, but I will exercise it. Lunch bhale aapka late ho jaye. You know, I deliberately raised these issues, and I'll tell you the context in which I raised them. During our freedom struggle, our university student community and even some teachers were at the forefront in many ways. महात्मा गांधी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल के घर आके ठहरते थे और वहीं से उन्होंने पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो कॉल था वही ड्राफ्ट किया था। प्रिंसिपल सुशील रुद्र और वाइस प्रिंसिपल चार्ल्स एंड्रूज, जो बड़े भारी भारत के हितैषी थे। चार्ल्स एंड्रूज अंग्रेज थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर के बहुत करीबी थे। गोखले ने एंड्रूज को भेजा था साउथ अफ्रीका में कि गांधी को ले आओ। एंड्रूज गांधी को मना कर ले आए भारत के, यही भारत का उद्धार करेगा। उन लोगों के साथ मिलकर गांधी ने वो ड्राफ्ट किया था और वाइस रॉय इस बात से खुश नहीं थे। तो सुशील रुद्र को उन्होंने कहा कि गांधी का आना यहां रोक दो। रुद्र का जो जवाब है, इतिहास गवाह है, रुद्र ने कहा कि मैं ईसाई हूं, मेरे द्वार सबके लिए खुले, विशेष रूप से महात्मा गांधी के लिए। ये तो उनका जवाब था। उसके बाद रुद्र पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उनको एफआईआर नहीं किया, जेल नहीं भेजा, वाइस रॉय शांत हो गए। वही मॉरिस ग्वायर के साथ हुआ 42 की मूवमेंट में। हमारे विश्वविद्यालय के 3 कॉलेजेस थे, हिंदू, रामजस और सेंट स्टीफेंस। उसके छात्रों ने कॉलेज के आसपास कैंपस में इधर छोटी मोटी तोड़फोड़ की। वाइस रॉय ने नाराजगी जाहिर की ग्वायर से कि आप एक्शन लीजिए, इनको पनिश कीजिए। तो ग्वायर ने जवाब दिया, अंग्रेज ग्वायर चीफ जस्टिस इंडिया के रहे, उन्होंने जवाब दिया, बच्चे हैं, नादानी करते हैं और ये उनका देश है। उसके बाद वाइस रॉय चुप हो गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बराबर कांग्रेस के जितने बड़े नेता वहां पहुंचते थे और आते रहते थे, गांधी जी भी जाते थे, छात्र उनको अपने अपने हॉस्टल में बुलाते थे कि प्रेरित करो, समझाओ, संबोधित करो। और मेरे पिताजी चूंकि वहां छात्र रहे, वो बराबर आते थे वहां पर। कभी अंग्रेज सरकार ने रोका नहीं उनको जाने से, नहीं रोका। यूनिवर्सिटी में वो दखल नहीं देते थे, कभी नहीं दखल दिया उन्होंने। मेरे पिताजी 42 की मूवमेंट में छात्र ही थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, डायनामाइट लेके चले गए थे बनारस। पुलिस पीछे पड़ी, शरण लिए, वापस आकर यूनिवर्सिटी में अंदर नहीं घुसी। जो आपने कहा ना कि वाइस चांसलर हिंदुस्तानी थे, अमरनाथ झा, परमिशन नहीं देंगे तो अंदर नहीं जाएंगे।
वही पिताजी मेरे जब वाइस चांसलर बने इलाहाबाद के 1980 में, तो उन्होंने कहा मुझसे कि जिस अंग्रेज सरकार के खिलाफ मैं लड़ा, उसने हमारी यूनिवर्सिटीज को कहीं ज्यादा ऑटोनॉमी दी थी। मेरी सरकार 1980 की बात है, नहीं देती वो ऑटोनॉमी हमारी ही यूनिवर्सिटी को। ये कहां से कहां हम चले आए। कितना भी किया हो, यूनिवर्सिटीज में अंग्रेजी जब लाए तभी भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसी दौर में सीवी रमन, उसी दौर में पीसी राय, उसी दौर में जगदीश बोस, उसी दौर में एसएन बोस, उसी दौर में मेघनाथ साहा, ये सब वहीं से उत्पन्न हुए थे। कुछ तो हो रहा था। उसके बाद जब हमने अपने हाथ में बागडोर ले ली तो कुछ दिखता नहीं। मैं आखिरी बात कहूंगा, पॉलिसी लागू अनाउंस हो गई थी, लागू नहीं हुई थी, कोविड आ गया। कोविड के दौर मैंने वेबसाइट्स देखी भारत की यूनिवर्सिटीज की, विशेष रूप से सर कालर साहब, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की, ऑल द प्रोमिनेंट वंस इन इंडिया, कि कोविड के संदर्भ में ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। कहीं पे मुझे कुछ नहीं मिला, क्षमा कीजिएगा, किसी भी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक भी संस्था के वेबसाइट पे कहीं एक जगह मैंने, बड़ी जानी मानी संस्था है मेडिसिन की, लिखा था इंपॉर्टेंट नोटिस, तो मैंने कहा शायद ये कुछ कह रहे होंगे। क्लिक किया, वहां लिखा था फलाना टेंडर बिल्डिंग बनाने का फलाने दिन खुलेगा। दैट्स ऑल दे हैड टू से, नॉट वंस। दैट इज व्हाई आई आस्क्ड व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। उसी दौर मैंने बाहर की संस्थाओं के वेबसाइट्स देखे और हर एक ने कुछ न कुछ कोविड के संदर्भ में एक अच्छा रचनात्मक कार्य लागू कर दिया था। कोई वैक्सीन बना रहा था, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा था, कोई कुछ यूज कर रहा था। ये फर्क है जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, बाहर जाके देखो तब थोड़ा समझ में आएगा, ये फर्क है। रॉबर्ट गोहिन 32 वर्ष के असिस्टेंट प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, कॉन्ट्रैक्ट पे, परमानेंट भी नहीं थे, कुछ नहीं थे। उनको उसी समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जो थे गवर्नर्स, कुछ उनमें दिखाई दिया, उनको प्रेसिडेंट बना दिया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का। 32 years, assistant professor, contractual, he was made president of Princeton University. मेरे ख्याल है 25-26 साल रहे 60s के दौर में, and he made Princeton University into Princeton University। जो उमेश जी कह रहे थे कि वो 10 साल तो पहले प्रोफेसर रहो और पीएचडी भी रहो और ये भी रहो, तो बढ़ा जाएगा, वो करेगा क्या? Let India think about it. I want you to think, because the torch has been passed on to you. You have to now take the torch and light as many lamps as you can. अपने को जगाओ, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। No one will come and do it for you. तुम ही को करना है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी जगह। Do something, take this country forward. It is only knowledge and education, as Gandhiji said, that will help a country to progress. Thank you very much. Professor Madan Chaturvedi has become really benevolent today. So he's allowing some questions, comments. Please. Mic hai? I would love to have some comments, please, or even questions, criticism. Good afternoon. First, identify yourself. माइक आपको ऑन करके दिया जाएगा, उसको ना छेड़िए। Good afternoon to the honorable guests. पास रखिए। I am Dr. Chandramouli Pandey. I am working as a professor in Faculty of Sciences at the university. So it was really wonderful experience listening from all such eminent speakers and lecturers and professors. And I am really mesmerized how Gandhi's concept of education and national education policy was. And really, it was really a wonderful experience. Sir, now my question with the NEP 2020 is that it's taken a lot of time and efforts to make this policy. I think after 86, this policy has been implemented in 2002. Now, sir, adaptation of this policy by different universities is still a challenge. And we are still lacking with the many universities, even the infrastructure facilities. Even we are lacking with the trained teachers also. As sir has said, it is more focused on
teachers or the teaching ability and the students. So how we are going to cope up with these problems? Apart from that, how are the fundings? Because the transfer of funds from government to institution is still a problem. So how we are going to do it? Would you like to answer that? I'll answer. Look, don't ask these specific questions. There are answers to this. I'll tell you, there are answers to this. Government has created various avenues for transforming universities. Like when we create the Higher Education Commission of India, the third vertical would be of financing, which will completely re-look at the financing of universities, including research, for which you will have National Research Foundation. 50,000 crores have been already awarded in the last budget. दिया नहीं गया है, अनाउंस तो हो ही गया है, ठीक है? तो उसमें भी ये है कि हम रिसर्च को अलग से देखेंगे, यूनिवर्सिटी के फंडिंग आएंगे, यूनिवर्सिटीज को अपने फंड्स जनरेट करने के लिए जो अभी स्कोप नहीं था, जिस पर बात दुनिया कर रही है, हम कर रहे हैं। देखिए, ओवरनाइट तो टीचर क्वालिटी नहीं बदलेगा, और टीचर क्वालिटी नहीं बदलेगा तो यूनिवर्सिटीज नहीं बदलेंगे। तो उसके लिए क्या कहा गया कि हमारा जो प्रोसेस था सिलेक्शन का, अब ये बहुत सारे लोग नहीं एग्री करेंगे या करेंगे, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम आपको बताया कि हम कम से कम 200 सेमिनार्स दे चुके होंगे। हम हर बार एक बात पूछते हैं कि आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि आपका जो वाइस चांसलर सेलेक्ट हुआ है वो ईमानदारी से और मोस्ट डिजर्विंग है। मोस्ट पीपल हैव सेड नो। अब हम ये भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि लेक्चरर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बड़े ईमानदार होते हैं, सबसे अच्छे लोग सेलेक्ट होते हैं, और इनवेरिएबली यंग क्राउड कहा है नहीं। तो हम लोगों ने क्या कहा है पॉलिसी में, टेन्योर ट्रैक टीचर लाएंगे। क्यों? अभी जो एक कमिटी बैठ करके सेलेक्ट कर देती है, आपको आके ज्वाइन कर लेता है, स्टाफ रूम में बैठ जाता है, आप कहते हैं ये क्या अभी, अब फिर पता लगा लगता है किसका भतीजा है, ये किस मंत्री का रिलेटिव है, ये किस संघ से जुड़ा हुआ है। तो खत्म करने के लिए टेन्योर ट्रैक लाओ। क्यों लाओ? टीचर आके बैठेगा और अब उसको पेयर ग्रुप भी एसेस करेगा। आपके साथ आके बैठता है, वो 3 साल पढ़ाएगा, और ये टेस्टेड प्रोसीजर। हमने आपको कहा कि देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई एकदम आमूल चूल नई बात मत खोजिएगा। हम लोगों ने इसको अमेरिकन मॉडल को कॉपी किया है कि वहां ये है, हम भी करेंगे। एक बात सर, मैं परमिशन से एक बात बता दूं। देखिए, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट 480 पेजेस का था। आई एम प्रिवी टू दैट। इसको लेकर के प्रधानमंत्री के पास गए थे लोग। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर ये 480 पेज का रिपोर्ट इंप्लीमेंट करना है तो कठारी कमीशन ही कर दो ना। आई एम प्रिवी टू दैट, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इतना करोगे क्या? अगले साल मैं क्या बोलूंगा देश को कि ये होगा? इसलिए ये पॉलिसी अब 62 पेज की केवल है, एकदम इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। 5 चीजें हैं हर सेक्शन में। क्या गड़बड़ी है, क्या बदलना है, कौन सी संस्था बदलेगी, कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा। पढ़ लीजिए पूरी पॉलिसी को। प्रधानमंत्री ने यही 5 पॉइंट दिए थे। लोग कमिटी लौट के आई, हम लोगों ने फिर ड्राफ्ट किया और फिर दिया। तो कंप्लीट प्रोसेस चेंज होना है, ध्यान से पढ़िए, इंक्लूडिंग स्कूल एजुकेशन। उसमें हम नया कंपोनेंट ला रहे हैं कि वो क्लासरूम टीचिंग करके सेलेक्ट होगा। हायर एजुकेशन में टेन्योर ट्रैक से सेलेक्ट होगा। तो देयर आर प्रोविजंस। अगेन आई विल से एट द एंड, पॉलिसी इज वेरी गुड, वेरी वेल ड्राफ्टेड। बहुत सारी चीजें जो रेलेवेंट हैं वो डाली गई हैं। इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि आप किसको करने कहते हैं। जो हमारा तरीका अभी तक रहा है कि 3-4 लोगों की कमिटी, 4-5 लोगों की कमिटी करती है, चुपके से उसको लागू करते हैं। जैसे एपीआई पर हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है, कंप्लीटली रूइन कर दिया हायर एजुकेशन को। ये रीड फ्रीकोनॉमिक्स, आपको उसका जवाब वहां मिलेगा। फ्रीकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, द सुमो रेसलर एंड द स्कूल टीचर्स। पॉलिसी अच्छी है, रिकमेंडेशंस हैं, लागू कैसे होगा ये आप पर निर्भर करेगा। जैसा सर ने कहा कि आपको जगह रहना है तभी वो लागू होगा। Thank you very much. Just quickly, when you said about funding, and ये भी इस माइंडसेट से इंस्टीट्यूशंस हैव टू कम आउट कि हर वक्त गवर्नमेंट के पीछे पड़े रहते हैं कि पैसा दो पैसा दो। आई हैव नॉट सीन यूनिवर्सिटीज, government universities, state and central both, trying to move towards a situation where they generate their own funds. Society doesn't see value in them. All the public funded universities of America hardly draw any money from government sources. All the money comes from private sources because they see value. They give to society. The fastest growing economic region in the United Kingdom is the geographical area of Cambridge University. It's the fastest growing economic region. University of Houston contributed $7 billion to the economy of Houston city during COVID.
हमारे यहाँ तो हर वक्त गवर्नमेंट के पीछे पड़े रहते कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो. We need to get out of that. Thank you. Please. Hello. Myself, Professor R.C. Sharma, Department of Physics and Equations, SBT University. I am listening the honorable analysts throughout, and there were questions about the teacher's capability in an institution, also about the student, also about the management, and also the government interference in the education. I need to say, as far as the faculty is concerned, if a faculty joins the teachers, and I think he has some capability to be a teacher, and positively he will work for the benefit of the institution, one way or another. As far as the improvement in teacher is concerned, I think the student is the better judge to change the way of working, way of taking of the teacher. If we have the good quality students, then it is possible to change the quality of teachers, and he has to manage accordingly. He has to improve himself. Regarding the autonomy we are talking about, I think the management is very much required in any institution to work smoothly. And if there is no management, there is no audit, then I think it becomes very difficult to look at the things. Autonomy means we have to implement our policies. We can make the improvement, and the rest of the things will be taken care by the management. Now, in this regard, What is your question? sir, my question is that we have to look about Gandhian thoughts in this regard. And Gandhian thoughts was that we have to think like in this way that everything goes smoothly for the improvement of the society. The one question arises that every research is for the benefit of the society. I have finished and I am talking about the discovery of this light organization. And that is about the benefit of society. The discovery of Einstein was the benefit of the society. Every research is for the benefit of society. जी, आपका प्रश्न क्या है? Sir, this is the discovery. Oh, you're making a statement. Oh, okay, fine. Thank you very much. Thank you very much. अरे नहीं, उसको तो पूछने ही दीजिए. अरे इसको तो पूछने ही दीजिए. शर्मा जी इतना महिला हाँ, बिल्कुल. I'll ask a quick question, sir. Yes, please. Sorry for taking that mic, sir. I don't want to miss that opportunity. Sir, quick question is, sir, we know that the policy states a different chapter on school education and a different chapter on higher education institutions. Now, I come from the healthcare background, sir. So definitely, I know there are things which will be clear to me later. But overall, if I want to see, sir, as a higher education institution teacher, how can I engage with school education components so that I know very well that what kind of school children are going to come to my institution in, say, future 5 years or 10 years? So that is my question. Sir, can I answer that? Yeah. I'll very quickly tell you two things that the policy has recommended. One is every child will have a health checkup in the school sector, right from the age of 3 to 18. At the moment, we admit students at the age of 6, which we are going to change. We'll admit students from the age of 3, and that will be 1. Second, how would higher education engage with school education? We have put a provision. Every research scholar, irrespective of the discipline, will have to spend some time in school. We could find that there is a disconnect between school education and higher education, which we need to bridge, and that is what we have recommended. Now, how would health institution or medical colleges would do? Perhaps you can help schools do their health checkup, help them prepare health card. What we are going to do? Every child will have a health card now. We are very particular about it because if you read first 3 chapters, and I was integral part of that, most children drop because they are so weak. तभी हम breakfast system लाए हैं. हम स्कूल में गए, बच्चों को देखा सो रहा है.
उसको कहा क फॉर कौआ, क फॉर कौआ, क से कौआ, क से कौआ करता है। जैसे ही कहा 2 अनार 3 आम, कितने हुए? काम नहीं कर रहा है, भूखा है बच्चा, कल रात को भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया है, केवल मिड डे मील के लिए आया है। तो आप वहां एंगेज करिए, बच्चों के साथ काम करिए, बच्चों का हेल्थ चेकअप कराइए। बहुत सारे बच्चे सुन नहीं सकते हैं, टीचर नहीं समझ रहा है। बहुत सारे बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, टीचर नहीं समझ रहा है। बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन है, टीचर नहीं समझ रहा है। तो आप मदद करिए उसको, और अगर एक एक मेडिकल कॉलेज 5-5 स्कूल को गोद ले ले तो शायद देश बदल जाए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, बहुत शर्मा जी ने करीब करीब सब कुछ कह ही दिया। बिकॉज यू आर फ्रॉम अ मेडिकल साइंस बैकग्राउंड, I don't see too much of experimentation in science realm in schools. स्कूल का पाठ्य change that. आप बैक्टीरिया को वो स्कूल के मिट्टी के पानी में से निकाल के दिखाइए, अमीबा को दिखाइए। आप मेंडल की लॉस का वहाँ पर स्कूल में फील्ड में कुछ फूल उगा के वो कहिए कि तुम लोग देखो, जेनेटिक्स सीखेंगे। ये सब चीज़ें कीजिए तो आपको खुद समझ में आएगा कहाँ दिक्कतें हैं और कहाँ भला हो सकता है। प्लीज, आपको कुछ पूछना था मिस? पूछो तुम। Sorry, sir. Sir, first of all, thank you so तुम much. भी खड़े रहो तभी नंबर आएगा। मदन जी खड़े लोगों को ही पूछते हैं, बोलिए प्लीज। Thank you so much, sir. It was an honor listening to all of you. Sir, a question a little off track, but in the NEP, we are encouraging international universities to open campuses in India. Will that increase the problems faced by the Indian universities, or what challenges are we expecting there? If you ask me, I don't know what my distinguished panelists have to say. Indian universities सक्षम है अपने लिए अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। उनको बाहर वाले आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। डोंट वरी अबाउट इट। Good afternoon, sir. Sir, I'm Shipra. I work as a healthcare researcher at Sanrachna. Sir, मेरा क्वेश्चन है हमारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से, हम सब ने शायद मूवी देखा होगा 3 इडियट्स। तो उसमें जब टीचर पूछता है कि हाउ द इंडक्शन मोटर वर्क्स, तो वहाँ आमिर खान उसने सिर्फ एक साउंड निकाला, and the other one who was the most intelligent student in the class, उसने एक definition बता दिया। तो my question is कि अगर induction मतलब and the one जिसने सिर्फ उसका sound निकाला था, he was not pursuing the degree of BTech. उसका perspective था कि वो सिर्फ learning के लिए आए, and in the end of the movie they show कि he has become a scientist and he has all the students who were only doing the physics experiments and not theory. तो NEP में भी है ये, medical education पे मैंने थोड़ा काम किया है, तो उससे मुझे पता चला कि they have shifted to clinical skills. बेसिक एजुकेशन से क्लिनिकल स्किल्स से ट्रांसफ़र किया है वर्टिकल इंटीग्रेशन के थ्रू, जिससे क्लिनिकल स्किल्स ज़्यादा आए। तो सर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी are they of that nature? They are teaching, they are providing the workshops to the teachers with that perspective to just show them practically and not theoretically. Yeah, please. 2 कंपोनेंट हैं इसमें जी। एक कंपोनेंट का मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। मेरा क्लासमेट प्राइमरी स्कूल और आफ्टर 5th क्लास उसने पढ़ाई छोड़ दी। उनका एग्रीकल्चर लैंड था, बनिया कम्युनिटी से आते तो रेयर एग्रीकल्चर करते हैं, उनका बिजनेस ज़्यादा ध्यान रहता है। बट और मेरी जो एग्रीकल्चर की लैंड थी उनसे सटी हुई थी। मैं क्लास 9th में जब पढ़ रहा था तो समर वेकेशन में गया और देखा कि है वो अपने उनका एक पंपिंग सेट था, तो मैं गया उनसे मिलने। तुम क्या कर रहे हो? 5th क्लास के बाद छोड़ दिया था। बोला कि जो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक क्रॉम्पटन कोई एक मेक था कि ये खराब हो गया थोड़ा, इसको ठीक कर रहा हूँ। और उसने ठीक किया अपना, उस मॉडल का उस मेक का जो लोग पंपिंग सेट खरीदे थे हमारे पूरे रीजन में उधर, उन सबके साथ वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी। और वो व्यक्ति सिर्फ अपना नहीं ठीक किया, उसको लोग बुला के ले जाते थे और उसने औरों का ठीक किया।
ये बात जब कंपनी को पता चली तो कंपनी ने उसको हायर कर लिया. टुडे इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी, ओनली क्लास 5 पास. वाओ. सो अब बात आई उसकी कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग वो कंपनी ने करा दी. जो कंपनी को जरूरत थी वो उसके पास हुनर थी. तो जो आने वाला समय है वो आपके हुनर को सलाम करेगा, आपके डिग्री को सलाम नहीं करेगा. ये एक पार्ट है. और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी स्लोली एड्रेस हो रहा है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये कह रही है कि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको हम यूनिवर्सिटी सिस्टम उसके रिकॉग्नाइज करे एक्सपीरियंस को और इतना क्रेडिट दे दे, रेस्ट ऑफ द क्रेडिट्स यू कैन लर्न थ्रू योर रेगुलर मोड आल्सो और डिस्टेंस मोड एजुकेशन. सो ये बात नेशनल एजुकेशन में भी पॉलिसी में भी आ रही है. थर्ड, टीचर्स ट्रेनिंग की बात. जो ट्रेनर तो पहले हमको चाहिए जो टीचर्स को ट्रेन कर सके. वो शायद हमको जो है बाहर से ही अभी लाना पड़ेगा. हम IIT और IIM को बहुत हैवी पेमेंट करते हैं और हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे IIM 6 लाख रुपीज मांग रहा है. अभी हम कहाँ से ले आए अपने टीचर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है उस पर कहीं न कहीं से हमको रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे. जो हमारे अच्छे मॉडल्स हैं उनको हमको एंगेज करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा. धीरे धीरे करके हम कुछ ट्रेनर तैयार हो जाएंगे तो फिर रेस्ट ऑफ द को ट्रेन करेंगे. समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना. Yeah, you can, but before you do that, there is a lady who's been waiting. Go ahead, quickly, very quickly. अब लंच भी नहीं, अभी पहले नेक्स्ट सेशन शुरू करना है. At that time, faculty development programs were introduced, a basic course as well as an advanced course, to align the faculty as well as apprise them of the competency-based curriculum that was initiated by the Medical Council. So we do have those programs for training the faculty, and it has become mandatory for them to attend these programs if they want further promotion. Okay. So part of the regulation Right. as well. That's good news. That's good. But I don't know of a single university in Europe or America which has faculty development programs. They develop themselves on their own. Miss, you want to ask something? Good afternoon, Vanessa, Honorable Dias, and all the. आप बोलिए, सवाल पूछिए. Sir, I am Dr. Rakesh Malik, Assistant Professor in Faculty of Law, SGT University. मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है. सर ने कहा कि अभी जो वाइस चांसलर्स के लिए प्रोफेसर का 10 years का एक्सपीरियंस है, दैट इज़ अ बैरियर, एंड डेफिनेटली आई एम एग्री दैट इज़ बैरियर टू ब्रिंग द जो भी प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने में वो कहीं ना कहीं बैरियर है. बट जो एमिनेंसी का जो क्राइटेरिया होगा वो कितना फेयर, कितना ट्रांसपेरेंट होगा, उसके लिए क्या रखा गया है वहाँ? क्या ब्रदरहुड का जो फॉर्मूला है जो कि एकेडमिक्स को बहुत पीछे धकेलता है, तो उसको हम कैसे रोक पाएंगे? Okay, here I'll tell you something very quickly. I will beg your indulgence to answer this question. When I was a child, मैं आपको कुछ ही समझा रहा हूँ. बहुत अच्छी ट्रेन्स चलती थी इंडिया में. डीलक्स, फ्रंटियर मेल, तूफान मेल, कालका मेल. I was proud of those trains. मैं उनकी स्पीच लाता था. They were great trains. As I started growing up, वो ट्रेन्स खराब होने लगी हैं. रेलवेज मेंटेन नहीं कर पाए, उनको खत्म हो गई. फिर वो नई चलाई, उन्होंने राजधानियाँ चलाई. इधर वाली राजधानी, उधर वाली राजधानी. धीरे धीरे मैंने जो आखिरी बार राजधानी में यात्रा की थी, बुरा हाल था उसका. फिर उसको भी खत्म करके हमने शताब्दी चलाई. फिर हमने उसको खत्म करके एक और चलाई. अब हम कोई और नई ट्रेन चला रहे हैं. भारत की ये अजीब बीमारी है, संस्थाओं को हम बरकरार रखना नहीं जानते हैं. ये जो आप कानून लगाते हैं उससे भला नहीं होता है. सरदार पटेल ने क्यों हंसा मेहता को चुना? कौन थे सरदार पटेल? कोई डिग्री नहीं थी उनके पास. लोग समझते हैं लॉ की डिग्री थी, डिग्री नहीं थी. वो क्वालिफाई किए थे टू प्रैक्टिस लॉ इन इंग्लैंड, कोई डिग्री नहीं थी, पर उन्होंने हंसा मेहता को चुना. समाज को इसके लिए सजग होना पड़ेगा कि अच्छे लोगों का चयन कैसे होता है. कानून से करते जाएंगे तो इसी तरह ट्रेन वाला सिंड्रोम होगा कि इसके ऊपर एक और थोप दो, फिर एक और थोप दो, फिर एक और थोप दो. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो इतनी मानी जानी है,
उस यूनिवर्सिटी का बुरा हाल था जब तक उसकी सरकार ने उसको जकड़ के रखा था। हार्वर्ड इवॉल्व तब की है जब सरकार हट गई और वहां के नागरिकों ने उसका दायित्व लिया और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कानून नहीं बनाए कि हार्वर्ड का प्रेसिडेंट होगा तो उसको 30 साल का अनुभव होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंसटन का भी नहीं है। तो सोचिए, आपके पास उदाहरण है जीते जागते। समाज को सजग होना चाहिए, हम सबको सजग होना चाहिए, कानून से नहीं होगा। Yeah. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I request you to please be seated for another few seconds. We just need to felicitate our speakers. A woman always has the last word. Thank you, sir. That's so nice of you. That was indeed rare when we had all these vice chancellors and senior professors from 5 different universities as per their formal introduction and designations. But I'm compelled to say, after listening to these beautiful discussions, which directly came from the core of their hearts, that we just had 5 simple, honest teachers on the dais today, representing every primary, high school, and higher education teacher of the nation. I think they deserve a big round of applause. We had Professor C.B. Sharma, who himself was involved in the drafting of NEP 2020, and so beautifully, but in brief, compared it with the NEP 1986. That was a rare piece of information for all of us. And he also pointed out and reminded us the definition of a vice chancellor. So we hope and pray that once again we have those VCs who literally have the power to bestow degrees upon graduates in convocations. Thank you, sir. And then we have Professor Umesh Rai, who dared to question the teaching methodologies and urges them to make more practical. Professor Bechan Lal beautifully highlighted the fact that education needs to be society-centric, and no flexibility or strictness in rules can bring a change in the mindsets of the society. Society includes the teachers, the guardians, and the students. And of course, then Professor O.P. Kalra, who in very simple words suggested to reduce the teacher-student divide. And our moderator, our evergreen orator, Professor Dinesh Singh, who leaves us all speechless with his keen observation and wise experience. और सर, एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो आप अपनी खनकती आवाज में सच बोलने का आपका बेबाक अंदाज है, वो हर बार दिल ले जाता है. A big round of applause for Professor Dinesh Singh, the moderator, and our speakers. And may I request Professor Dinesh Singh to kindly felicitate our speakers. On behalf of SDT University, we are extremely grateful to all these wonderful academicians who shared the stage today and made us all proud. We breathed the same breath as these rare academicians. Can we have a big round of applause for all of them? And ladies and gentlemen, here we conclude the Vice Chancellor's conclave. Thank you so much. तुम हमेशा जो है ईश्वर भला I would have done nothing in my life if he had not been there. So that's the humbling relationship, I mean the teacher-taught relationship which sir even spoke about, which we just witnessed. That was really touching. बेचन जी, आपके लिए भी मेरे मन में वही स्नेह है. Thank you so much. Thank you so much, sir. Sir, just a little more request. I request O.P. Kalra, sir, the Vice Chancellor of SDT University, to kindly felicitate with the memento of SDT University as well. So this will remind all of you when you see
these mementos in your office to keep visiting SDT and educating us, enlightening us from time to time. Thank you so much, sir. Okay, sir. Thank you, sir. No, sir, we have another, we missed the tea session.